I request all the delegates who are outside, please come inside and take your seats. All the delegates, please come. Some volunteers can send all the delegates inside, and please close the door. I request the volunteers, close the door there, and all delegates are requested to come inside. Friends, now I am requesting Mr. Shailendra Dubey to inaugurate our All India Electricity Consumers Association to inaugurate this convention.
Mr. Shailendra Dubey. ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन की ओर से आज भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित इस राष्ट्रीय कन्वेंशन में मंच पर उपस्थित एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी इंजीनियर के अशोक राव जी, समर सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित बहन और भाइयों और सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, यह कन्वेंशन आज जिन परिस्थितियों में हो रहा है वह बहुत ही आवश्यक और कह सकते हैं कि अर्जेंट सिचुएशन, अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। और जब राजधानी दिल्ली में हो रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ जो प्रस्ताव लिए जाएंगे, यहाँ जो चर्चा होगी, उसका संदेश सुदूर देश के कोने कोने तक जाएगा। अब मैं सीधे विषय पर आ रहा हूं। यहाँ पर विषय लिखा हुआ है, टू रेजिस्ट privatization of electricity, installation of smart meters and electricity amendment bill. All these issues are directly related with the privatization. तो अगर एक शब्द में हम कहें तो बिजली के जो बुनियादी जरूरत है, और जरूरत शब्द थोड़ा सा छोटा पड़ता है, जो बुनियादी अधिकार है उसकी रक्षा के लिए यह कन्वेंशन हो रहा है, यह कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। और जब हम निजीकरण की बात करते हैं तो बिजली जैसे बुनियादी विषय पर अगर निजीकरण की बात हो रही है तो यह जानना जरूरी है कि बिजली के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है। जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, सरकार को सबसे पहले उससे बात करनी चाहिए। सरकार को सबसे पहले उसकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उसका समाधान करना चाहिए। तो मेरी दृष्टि में बड़ा और छोटा अगर कहें तो कोई मैं स्टेक होल्डर मानता हूं इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में। नंबर 1 पर जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वह कंज्यूमर है, बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर, और यह कंज्यूमर्स की एसोसिएशन का ही कन्वेंशन है। और नंबर 2 पर जो स्टेक होल्डर है सबसे बड़ा, वह बिजली का कामगार है। नंबर 3 पर मैं किसी को नहीं मानता। नंबर 3 पर स्टेक होल्डर उस तरीके के हैं जो प्रॉफिटियर्स हैं, प्रॉफिट मेकर्स हैं, जिनको नुकसान होने वाला है, जिन पर असर पड़ने वाला है। ऐसे केवल 2 स्टेक होल्डर हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉय। 2 लोग हैं ऐसे। एक एक करके हम लोग चर्चा करें, और चर्चा करने के लिए हमें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली में यह कन्वेंशन हो रहा है और 2002 में दिल्ली विद्युत बोर्ड का प्राइवेटाइजेशन हुआ था। 2002 में। अभी क्या है 2025, 23 years have passed। अरे 1 साल 2 साल के बाद रिव्यू करना चाहिए। 1 साल 2 साल के बाद मूल्यांकन करना चाहिए कि निजीकरण का क्या असर रहा। आज 23 वर्ष के बाद भी इस पर चर्चा नहीं हो रही। दूसरा निजीकरण बिजली का कहा हुआ है, उड़ीसा में हुआ है। तीसरा फुटकर में कहीं कहीं पर हुआ। इन वन वर्ड इफ आई से द प्राइवेटाइजेशन इज ए फेल्ड एक्सपेरिमेंट, and the very failed experiment is being imposed in the largest province of the India, that is उत्तर प्रदेश। आपको मालूम है समाचार पत्रों के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। अभी थोड़ा रुक के उस पर बात करें। पहले बात कर लेते हैं कि निजीकरण हुआ तो दिल्ली में क्या हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 जब था, या उसके पहले से भी देश के कुछ शहरों में बिजली का निजीकरण था। मुंबई में, कोलकाता में, अहमदाबाद में, सूरत में, इन 4 जगहों पर बिजली का निजीकरण हमेशा से था, बहुत पहले से था। तो क्या कहा जाता है
कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद यूपी के पावर मिनिस्टर यही कह रहे हैं असेंबली में कि हम निजीकरण इसलिए करना चाहते हैं जिससे 24 घंटे गुणवत्ता परक बिजली कंज्यूमर्स को मिल सके, 24 आवर्स क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी। और एक बयान में भी वो चीप इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा है, एक बार भी नहीं कर रहा है। यह अपने आप में स्वीकारोक्ति है इस बात की कि इलेक्ट्रिसिटी इन द प्राइवेट सेक्टर मीन्स कास्टरियर इलेक्ट्रिसिटी, यानी निजी हाथों में अगर बिजली जाती है तो बिजली महंगी होती है। अब बिजली केवल जरूरत नहीं, मैंने कहा बिजली एक बुनियादी अधिकार है आज कंज्यूमर्स का, और जब कंज्यूमर्स का बुनियादी अधिकार है बिजली तो कंज्यूमर्स की रीच में होना चाहिए, उनकी पहुंच में होना चाहिए। और अगर दूसरे ढंग से भी मैं बात को कहूं तो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन बिजली राजनीति का विषय बन गया है। देश के जिस प्रांत में चुनाव होता है वहां ये चर्चा होती है कि हम मुफ्त बिजली इतने यूनिट देंगे, हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, हम बिलो पॉवर्टी लाइन को मुफ्त बिजली देंगे। और कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन मैं पूरे सदर्न इंडिया की तस्वीर आपके सामने रखूं, एक्सेप्ट केरला, इन होल ऑफ द सदर्न इंडिया द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री फॉर द फार्म सेक्टर। अभी वह तमिलनाडु में फ्री रहती है, चाहे डीएमके की सरकार हो चाहे ना डीएमके की सरकार। वह आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के समय में फ्री हुई थी, उसके बाद आंध्र प्रदेश के दो हिस्से हो गए, तेलंगाना राष्ट्र सत्ता में आई तब भी फ्री थी, अभी कांग्रेस आ गई अभी भी फ्री है। आंध्र प्रदेश में दो पार्टियां आई, वाईएसआर तब भी फ्री थी, अभी नायडू आ गए तब भी फ्री है। कर्नाटक में बीजेपी आ जाए तब भी फ्री है, कांग्रेस आ जाए तब भी फ्री है। तो इन होल ऑफ द साउथ इंडिया एक्सेप्ट केरल इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री फॉर दी ट्यूबवेल्स, फ्री फॉर द फार्मर्स। दिल्ली के जो कंज्यूमर यहां पर होंगे वो जानते हैं। तो उपयोग करते हैं तो 8 रुपए, लेकिन 8 रुपए कहना भी गलत है, पर किलोवाट के हिसाब से लोडिंग है। और दिल्ली में एक विचित्र तरीके की लोडिंग है, करीब 24% 25% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है पर यूनिट, 7% पावर परचेज का अभी मुंबई की तरह भी जरा हम लोग जान लें। मुंबई में 3 प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं, मेनली 2 प्राइवेट कंपनी। एक अदानी पावर कंपनी मुंबई में काम करती है, दूसरा टाटा पावर कंपनी काम करती है। दिल्ली में भी 2 कंपनी काम करती है,
टाटा पावर कंपनी काम करती है और रिलायंस पावर। वहां अपने प्लांट नहीं लगाए। 32,000 मेगावाट अगर बिजली की मांग उत्तर प्रदेश में होगी तो उत्तर प्रदेश के अपने स्टेट जिनको का जो राज्य विद्युत उत्पादन निगम अपना है उसका उत्पादन कुल 5,000 6,000 मेगावाट है। ऐसा नहीं उसका उत्पादन यानी 1/4 बिजली उत्तर प्रदेश का अपना स्टेट जिनको जनरेट करता है और 3/4 बिजली हमें खरीदनी पड़ती है। यह बिजली कई जगह से खरीदते हैं, सेंट्रल सेक्टर से खरीदते हैं, एनटीपीसी से, एनएचपीसी से, न्यूक्लियर पावर से, बाकी प्राइवेट सेक्टर से खरीदते हैं। और प्राइवेट सेक्टर से जानते हैं कितने की बिजली खरीदते हैं? 7.5 रुपए पर यूनिट की बिजली खरीदते हैं, एवरेज है जो प्राइवेट सेक्टर से खरीदते हैं। कहीं कहीं से 19 रुपए पर यूनिट की भी बिजली खरीदते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पावर परचेज का एग्रीमेंट जो है, एवरेज पावर परचेज कास्ट ज्यादा है और कंज्यूमर की कास्ट कम है। मैक्सिमम टैरिफ उत्तर प्रदेश में कंज्यूमर का है 6 रुपए 50 पैसे पर यूनिट, चाहे जितने यूनिट बिजली का उपभोग करें। ये दिल्ली से लगा हुआ है, आपको केवल एक रेखा पार करनी पड़ती है, सड़क को इधर कहते हैं दिल्ली, सड़क को उधर कहते हैं उत्तर प्रदेश। इतना फर्क पड़ जाता है सड़क के इधर आने में और सड़क के उधर जाने में। क्यों होता है ऐसा? अगर एक शब्द में मैं कहूं, इलेक्ट्रिसिटी इज सर्विस फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ए बिजनेस फॉर द प्राइवेट सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बिजली एक सेवा है, एक मिशन है, और निजी क्षेत्र के लिए बिजली एक बिजनेस है, एक व्यापार है। उस दृष्टि से वो लोग काम कर रहे हैं, हम उनको दोष नहीं देते। यह दोष है उस राजनीतिक सोच का कि जो बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच देना चाहते हैं। तो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कंज्यूमर जो है वो इससे सबसे बुरी तरह से हिट होने जा रहा है। दूसरे पार्ट में कुछ समय मैं इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज की भी चर्चा करूं, लेकिन पहले मैं कंज्यूमर्स की चर्चा कर रहा हूं। अभी जो स्मार्ट मीटर यहां पर लिखा हुआ है, इंस्टॉलेशन ऑफ स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर का मतलब है प्रीपेड मीटर, और इसका सीधा संबंध कंज्यूमर से है। अभी एक नया बिल उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट रूल कर दिया है, वह कहता है टीओडी मीटरिंग। टीओडी मीटरिंग का मतलब है टाइम ऑफ द डे मीटरिंग, यानी किसी समय बिजली का कोई रेट होगा, किसी समय कोई रेट होगा, किसी समय कोई रेट होगा। अब वो उसको डिफाइन कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग कि दिन के समय में बिजली की दरें 10 से 20% हम कम कर देंगे, और रात के समय जब डिमांड होगी बिजली की तब बिजली की दरें 10 से 20% हम बढ़ा देंगे। और बड़ा खुश होकर बताया जा रहा है कि दिन के समय पर जब लोग बिजली का उपभोग करेंगे तो अपने गैजेट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कर लें। अरे भाई, कौन यूज कर ले गैजेट्स का? जो गृह स्वामी है वह अपनी ड्यूटी पर गया हुआ, जो गृह स्वामिनी है बहुत बड़ी तादाद में अब वो भी नौकरी करती है, दुर्गा शक्ति में, वह अपनी ड्यूटी पर गई हुई है। जो घर में बच्चे हैं वो अपने स्कूल में गए हुए हैं, अपने कॉलेज में गए हुए हैं।
तो गजट्स का इस्तेमाल क्या कोई भूत प्रेत आके कर लेंगे घर के अंदर? कौन कर लेगा गजट्स का इस्तेमाल? उस समय 20% बिजली सस्ती हो जाए। और जब सबको बिजली चाहिए, जब शाम का समय होगा, जब बच्चे पढ़ने के लिए बैठेंगे, वो अपना लैंप चलाएंगे। जब गर्मी का टाइम होगा तो एयर कंडीशनर चलेगा। जब बहुत ठंड होगी तो वार्मर चलेंगे, ब्लोअर चलेंगे। तब बिजली महंगी होगी। मुझसे एक पत्रकार पूछने लगे कि शैलेंद्र जी बताइए कि इसमें कंज्यूमर का क्या फायदा है। हमने कहा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा समझाएंगे तो आज समझेंगे नहीं। मैं एक लाइन में समझाऊं तो कंज्यूमर का इसमें यह फायदा है कि सरकार कंज्यूमर को कह रही है कि हम तुम्हारे एक जेब में 5 रुपए का नोट डाल रहे हैं, करारा नोट डाल रहे हैं, नया निकल के आया है एटीएम से, और तुम्हारी दूसरी जेब से 500 रुपए का नोट निकाल रहे हैं, वह भी करारा नोट, वह हमारे पॉकेट में आ रहा है, ये हम तुम्हारे पॉकेट में डाल रहे हैं। क्या मतलब है टाइम ऑफ द डे मीटिंग? क्या मतलब है प्रीपेड मीटरिंग का? सबके हाथ में मोबाइल है, खुद चिंता करनी पड़ती है कि इसकी चार्जिंग समाप्त हो रही। वो तो केवल मैसेज भेज देते हैं कि आपकी चार्जिंग समाप्त हो रही। खुद चिंता करनी पड़ती है और रिचार्ज करना पड़ता है। सेम स्टोरी इज गोइंग टू बी रिपीटेड हियर। कंज्यूमर रात को बैठा होगा, कोई छोटा अस्पताल होगा, अगर रिचार्ज नहीं हुआ तो बिजली चली जाएगी। एक बात मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, जब इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का नाम भी यहां लिखा हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के जरिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जनवरी, 10 साल से ऊपर गुजर गया, तब दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। और मुझे आज भी स्मरण है कि रामलीला मैदान की रैली में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली के नागरिकों को ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं जैसे कस्टमर जो है मोबाइल का अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर लेता है कि अब एयरटेल नहीं, अब आइडिया से ले लेंगे, अब जियो से ले लेंगे, अब बीएसएनएल से ले लेंगे या छोड़ देंगे। उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के जरिए हम उसको सर्विस प्रोवाइडर प्रदान करने जा रहे हैं। क्यों? जब चाहेगा तब वो चेंज कर लेगा। माइंड इट माय फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी as I told you is not a commodity, it is a service, number one. Number two, electricity is only commodity in India which is not sold at the same price to all category of consumers. ये अकेली चीज है। आप बाजार में संतरा खरीदिए, अमरूद खरीदिए, आम खरीदिए, किराना की स्टोर में जाइए, चाहे वहां अंबानी खरीदने के लिए आएंगे, चाहे अदानी खरीदने के लिए आएंगे, चाहे कोई आम आदमी जाएगा, सबके लिए हर चीज का रेट एक होगा। ठीक कह रहा हूं ना मैं? केवल बिजली है जिसका रेट अलग अलग है। सहमत आप मेरी बात से? yes. केवल बिजली है और रेट भी अलग अलग नहीं। एक ही कैटेगरी के कंज्यूमर के लिए अलग अलग कंजम्पशन पर रेट अलग। अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर है तो 0 से 50 यूनिट पर कोई रेट है, 50 से 100 पर कोई रेट है, 100 से 200 पर कोई रेट है, अलग अलग रेट है। चाहे राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी मोबाइल अपने हाथ में रखें, चाहे वह मोबाइल मैं रखूं, आप रखें, एक ही चार्ज सबको देना पड़ता है। लेकिन बिजली में अलग अलग चार्ज पड़ता है। क्यों पड़ता है? मैं फिर बेसिक बात पर आ रहा हूं, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ए कमोडिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज ए सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी इज फंडामेंटल राइट ऑफ द कस्टमर। यह मौलिक अधिकार है उपभोक्ताओं का। और उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द पेइंग कैपेसिटी। ये रेट हमने नहीं तय किए, द टैरिफ हैज बीन डिसाइडेड बाय द रेगुलेटरी कमीशन। हमने नहीं तय किया, इसमें नियामक आयोग ने इस टैरिफ को तय किया। तो इसलिए यह समझने की बात है कि जब बिजली के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ये तो प्राइम मूवर है भाई। अगर बिजली नहीं होती तो आप यहां तक चल के भी ना आ पाते। बिजली ना हो तो सारे उद्योग धंधे ठप हो जाए। सब इंडस्ट्री कहती है बंद करो बंद करो बंद करो।
जब ट्रेड यूनियंस की मीटिंग होती है, मैं कहता हूं अगर बिजली बंद कर दो तो सब अपने आप बंद हो जाए, कुछ बंद करने की जरूरत नहीं। इतनी ताकत है इलेक्ट्रिसिटी में। तो ऐसी बुनियादी चीज में जो स्टेक होल्डर है, 5 बार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल आया। मैं क्षमा चाहता हूं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, नाउ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 इज नो मोर, ये लैप्स कर गया। अभी रिसेंटली पावर सेक्रेटरी पंकज अग्रवाल जी ने एक बयान दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 25 बन रहा है, 3 महीने के बाद उसका ड्राफ्ट आ जाए। यह पहली बार हुआ है साथियों, मैं आपको बताऊं कि लगातार कॉन्जिक्यूटिव 2 पार्लियामेंट्स में, 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में 5 बार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया। एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन द पार्लियामेंट्री हिस्ट्री ऑफ द कंट्री कि 5 बार बिल लाने के बावजूद भी केंद्र सरकार उसको पारित नहीं कर पाई 10 सालों तक। यह केवल बिजली कर्मचारियों की वजह से नहीं हुआ। आप सामने बैठे हुए हैं, मैं विनम्रता पूर्वक आपको कहना चाहता हूं कि अगर बिजली के उपभोक्ताओं का साथ हमें न मिला होता तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को हम रोक नहीं सकते थे। आपका साथ हमारे लिए सबसे जरूरी है आपका साथ। और इसीलिए जब हम इस पर आगे चर्चा कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर जो है वह बिजली का कंज्यूमर है। बिजली का कंज्यूमर मैंने कहा अलग अलग कैटेगरी का है। आपको फिक्की से नहीं बात करना है, आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नहीं बात करना है, आपको किससे बात करना है? ऑल इंडिया कंज्यूमर्स एसोसिएशन से बात करिए, इनसे बात करना है। आपको किससे बात करना है? किसानों से बात करना है, किसान मंच से बात करना है, किसान यूनियन से बात करना है। केंद्रीय कृषि सचिव ने संजय अग्रवाल थे आईएएस, जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने यह कहा अचानक सुबह सुबह कि मैं क्षमा चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं किसान कानून को वापस ले रहा हूं। और मेरी तपस्या में कोई कमी थी, मैं किसानों को समझा नहीं पाया। ठीक है, उनकी तपस्या में कमी थी, वो किसानों को नहीं समझा पाए। लेकिन जब वापस लिया गया तो क्या कहा गया? संजय अग्रवाल को वह लेटर आज भी रिकॉर्ड पर है जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों के साथ, भारतीय किसान यूनियन के साथ, किसान मोर्चे के साथ बिना चर्चा किए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल नहीं लाया गया। किस चीज पर चर्चा किए बिना? बिजली पर। यह लिखा हुआ उसके अंदर, इन द ग्रॉस वायलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लाए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लाए। तो आप तो समझौतों का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, जो लिंक दे रहा है उसका भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप देश से क्षमा भी मांग रहे हैं और आप सम्मान भी नहीं कर रहे हैं समझौते का। तो मैंने कहा बड़े चुनौतीपूर्ण, बड़े चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं जब आज हम खड़े हुए। अगर हम यहाँ खड़े हैं और हम चंडीगढ़ की चर्चा ना करें, चंडीगढ़ एक बहुत छोटी सी जगह है। चंडीगढ़ का कुल जो लोड है 300 मेगावाट का लोड, 300 मेगावाट मैक्सिमम चंडीगढ़ का था। लखनऊ के 1/4 से भी कम। दिल्ली की तो चर्चा ही मत करिए, यहाँ तो हमारे ख्याल से 7,000 मेगावाट तक हो। ठीक कह रहा हूँ? 7,000 मेगावाट यहाँ का लोड है दिल्ली का। 250 मेगावाट लोड है। पिछले 5 साल से चंडीगढ़ में टैरिफ रिवाइज नहीं हुआ था, 5 साल से रिवाइज नहीं हुआ था। पूरे उत्तरी भारत में अगर सबसे सस्ती बिजली कहीं है तो चंडीगढ़ में। 4.5 रुपए पर यूनिट चंडीगढ़ में बिजली की दर है, सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं। और मुझे खुशी है आपको यह बात कहने में कि जब चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारी लड़ रहे थे तो फ्रंट लाइन में उनकी अगुवाई करते हुए जो बहनें खड़ी थी, जो माताएं खड़ी थी, जो भाई खड़े थे, वह चंडीगढ़ के बिजली कंज्यूमर थे, बिजली उपभोक्ता थे, जो अगली पंक्ति में खड़े। और जब 31 जनवरी की रात को वह काला कारनामा हुआ कि मुनाफा कमाने वाले चंडीगढ़ को बेच दिया गया। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है,
लेकिन चंडीगढ़ केंद्र शासित है। चंडीगढ़ की बिजली की दरें हरियाणा से भी कम है, पंजाब से भी कम है। 5 साल से दरें रिवाइज नहीं हुई, मैं आपको बता चुका। लेकिन जब कंज्यूमर सामने आके खड़े हुए तो 31 जनवरी को जिनके खिलाफ FIR हुई, जिनके खिलाफ मुकदमे किए गए, वह केवल बिजली के कर्मचारी नहीं थे। आपको जानकारी देना चाहता हूं, उसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी थे, कंज्यूमर भी थे, जिनके खिलाफ केंद्र सरकार ने FIR दर्ज किया है चंडीगढ़ के अंदर। कितने शर्म की बात है जो आपको मैं कहना चाहता हूं, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आती। आज तक 1 महीने से ज्यादा हो गया, समझौते के मिनट्स नहीं जारी किए, FIR नहीं वापस लिया है किसी के खिलाफ। और चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारियों को उनका दमन करके, वहां के कंज्यूमर्स का दमन करके, उपभोक्ताओं का दमन करके, एक गोयनका की कंपनी है, कोलकाता में काम करती है, बगल में ग्रेटर नोएडा में काम करती है, उसी कंपनी को अलग अलग नाम बनाती है। जैसे राक्षस लोग छद्म नाम कई कई रखते थे ना, उसी प्रकार से निजी कंपनियां राक्षसों की तरह ही अलग अलग स्थान पर अलग अलग छद्म नाम रखा करती है। यहां पर दिल्ली में अगर उनका नाम NDPL हो जाता तो नोएडा में NPL हो जाता, तो एमिनेंट इलेक्ट्रिक उनका नाम चंडीगढ़ में हो गया। अलग अलग नाम से वो जाने जाते हैं, जिससे उनको कहीं कोई फंसा ना पाए। बहुरूपिया शब्द समझते हैं ना, बहुरूपिया है यह सब जो निजी कंपनियां, और वह संजय गोयनका जी वहां पर विराजमान हो गए, उन्होंने कब्जा कर लिया। वह बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। मैं चुनौती देकर हमेशा कहता हूं विनम्रता पूर्वक, मैंने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार से कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे खराब डिवीजन हो, अब खराब और अच्छा कैसे होता है, डेमोग्राफी होती है, कंज्यूमर्स की का मिक्स होता है। एक इंडस्ट्रियल एरिया में आप किसी की पोस्टिंग कर दे, वहां से बेहतर रेवेन्यू आएगा, और एक बिल्कुल गरीबों की मलिन बस्ती में ऐसी जगह पर सबसे अच्छे इंजीनियर को पोस्ट कर दें, वहां से रेवेन्यू कम आएगा। यह डेमोग्राफी पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जो वर्स्ट डिवीजन है उत्तर प्रदेश का, ऐसे वर्स्ट डिवीजन को उत्तर प्रदेश की विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति को दे दिया जाए 1 साल में, और जो उससे थोड़ा अच्छा डिवीजन है वह किसी निजी कंपनी को दे दीजिए, चाहे टाटा को, चाहे गोयनका को, चाहे टोरेंट को। अब रिलायंस को केवल यही बची है, दम घुट रहा है उसका, यहां भी अदानी आ जाने वाली है, चाहे अदानी को किसी को दे दीजिए। और 1 साल के बाद अगर प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले बेहतर करके दिखा दे, 1 साल के अंदर बेहतर करके दिखा दे, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, हम लोग निजीकरण की बात करना बंद कर देंगे। लेकिन सरकार इसके लिए तैयार है। गवर्नमेंट इज नॉट रेडी। उसको मालूम है कि इसमें जोखिम है। गवर्नमेंट को मालूम है कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी अच्छा काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का संक्षिप्त परिचय भी आपको दे दूं। वह पॉलिटिशियन नहीं है पेशे से, वह एक IAS अधिकारी है। वह गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। वह 15 वर्ष तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ गुजरात में CMO में रहे। वह 7 वर्ष तक माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ दिल्ली में PMO में रहे। 22 वर्ष उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर में काम किया। फिर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तुम MLC तुम्हें बनाए देते हैं, पावर मिनिस्टर बनाए देते हैं। वह पावर मिनिस्टर बन के यूपी आ गए, और वह कहते हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कि मैं गुजरात से आया हूं, जहां 24 घंटे बिजली मिलती है, एक ट्रिपिंग नहीं होती, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण करने आया। मैंने उनसे पूछा प्रेस के माध्यम से कि आप गुजरात से आए हैं तो आपको यह जानकारी होगी कि गुजरात में 24 घंटे में ट्रिपिंग नहीं होती है। गुजरात की बिजली कंपनियां कंट्री में अव्वल हैं, तो वो किस क्षेत्र में काम करती हैं? साथियों, गुजरात की चारों विद्युत कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती हैं। कोई कंपनी वहां निजी क्षेत्र में काम नहीं करती, सब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। केवल अहमदाबाद शहर में प्राइवेट कंपनी है,
और उससे बढ़िया परफॉर्मेंस है वडोदरा, उससे अच्छा परफॉर्मेंस है राजकोट, जो संपूर्ण गुजरात पर काम करते। तो आप गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात मॉडल पर ही काम करिए। बिजली के क्षेत्र में गुजरात मॉडल निजी क्षेत्र का मॉडल नहीं है, वह सार्वजनिक क्षेत्र का मॉडल है। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं। तो उसी मॉडल को लागू करिए। लेकिन आप निजीकरण, आप कह रहे हैं कि नासा में कोई वैज्ञानिक था और वह जा रहा था, उसने सैटेलाइट से देखा और यह तस्वीरें उसने भेजा और मैं उसको शेयर कर रहा हूं। मैं महाकुंभ की चर्चा कर रहा हूं कि महाकुंभ के दौरान की वह तस्वीरें, आपने भी देखा होगा वह तस्वीर कि कितना लाइटेड है महाकुंभ। उन्होंने कहा यह अद्भुत काम, यह अद्भुत चमत्कार उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। किसके माध्यम से किया है? सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से किया है, बिजली कर्मचारियों के माध्यम से किया। आपको जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं। 52,000 बिजली के खंभे लगे थे महाकुंभ में टेम्परेरी। 73,000 एलईडी लाइट्स का हमने इंतजाम किया था। 85 सब स्टेशन हमने बनाए थे 11/400 के लिए। 11 सब स्टेशन हमने बनाए थे 33/11 के लिए। 585 डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर हमने वहां पर स्थापित किए थे। 1400 सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन, 450 सर्किट किलोमीटर एचटी लाइन। यह सब किसने किया था? सरकारी क्षेत्र के बिजली कर्मचारियों ने किया था। वह दिन रात नहीं सोए थे, वहीं पर उन्होंने ड्यूटी किया था। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि महाकुंभ में हादसा हुआ। 28-29 तारीख की रात को लोग मरे भगदड़, 30 मरे, 300 मरे, 3,000 मरे। अलग अलग चर्चा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात मैं विनम्रता पूर्वक कहूं, आप मुझसे सहमत होंगे। यह हादसा हुआ था रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में। अगर उस समय बिजली चली गई होती तो उस भगदड़ में कितने लोग मरते, कितना दर्दनाक हादसा होता, इसकी कोई कल्पना कर सकता है? लेकिन एक शब्द नहीं बिजली कर्मचारी। महाकुंभ समाप्त हो गया। हम लोग को दुख हुआ कि ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी ने सबको धन्यवाद दिया, बिजली कर्मियों को धन्यवाद नहीं दिया। अगर बिजली ना होती तो ना नासा से कोई देखता, और 28-29 तारीख की रात को ईश्वर ना करे जो हुआ होता, वह अकल्पनीय दृश्य होता, अकल्पनीय दृश्य। जब भगदड़ मची है तो बिजली का कर्मचारी उस भगदड़ के बीच में मजबूती से खड़ा था कि बिजली की ट्रिपिंग ना होने पाए, उसको देख रहा था। 3 सोर्स से हमने हर जगह सप्लाई किया, 3 सोर्स, और एक सोर्स की ट्रिपिंग के बाद 30 सेकंड का टाइम था। 3 सेकंड का, सॉरी 3 सेकंड का टाइम था कि कहीं ट्रिपिंग ना हो, और 45 दिन में एक भी ट्रिपिंग नहीं हुई महाकुंभ में। किसको श्रेय है ये? मैं केवल उदाहरण के तौर पर उज्जैन की बात करना चाहता हूं। 2016 में महाकुंभ हुआ था उज्जैन में। तब वहां पर जी न्यूज से जुड़ी हुई एक कंपनी, नाम नहीं याद आ रहा है, अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंचाइज में आ गई थी। और जब उसको कुंभ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कहा गया तो उस कंपनी ने मना कर दिया। उसने कहा हम ये पैसा नहीं खर्च करें, और मध्य प्रदेश की सरकार को वह करार रद्द करना पड़ा, और फिर सरकारी क्षेत्र की कंपनी को कुंभ का, उज्जैन का काम देना पड़ा। अगर आज प्राइवेट कंपनी महाकुंभ में प्रयागराज में रही होती तो वह यह सब काम करती। आखिरी बात बता दूं आपको, महाकुंभ में 45 दिन तक सबको हमने मुफ्त बिजली दिया है। यह आखिरी बात आपको बता देना चाहता हूं, सभी श्रद्धालुओं को मुफ्त बिजली मिली है। 1 यूनिट किसी से बिजली का नहीं दिया, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। मेरा प्राधिकरण ने कहा कि वो हमें पैसा देंगे, नहीं देंगे, 20,000 करोड़ रुपए तो हमारा पहले ही बकाया है सरकारी विभाग में, लेकिन श्रद्धालुओं को हमने मुफ्त बिजली दी है। या प्राइवेट सेक्टर देने वाला था? भूलिए ना आप, नहीं देने वाला था, प्राइवेट सेक्टर नहीं देने वाला था। अरे एक छोटी सी घटना हो गई थी तो 2000 में उड़ीसा में सुपर साइक्लोन आया था। सुपर साइक्लोन में बिजली का ढांचा सारा चरमरा गया था, गिर गया था। जानते हैं वहां कौन कंपनी काम करती थी? अमेरिका की AES कंपनी काम करने आई थी।
और अमेरिका की एईएस कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी। उस कंपनी ने कह दिया हम ये काम नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा दे, वी विल नॉट री इलेक्ट दी सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हम नहीं बनाएंगे इसको। वह भाग गई अमेरिका की कंपनी, उसने काम नहीं किया, अमेरिका की कंपनी। अरे सीधी सी बात है, प्राइवेट सेक्टर मुनाफा कमाने के लिए आती है, सार्वजनिक क्षेत्र सेवा करने के लिए आता है, सीधी सी बात। इसलिए मैं कंज्यूमर्स का आह्वान करता हूं कि कंज्यूमर्स को सामने आके इसकी अगुवाई करनी। प्रीपेड मीटर पे एक झटके में आपको समाप्त कर देगा। कुछ 5-6 मिनट बात कर लूं कर्मचारियों के भी आपके बीच में, उनका दर्द भी बांट। दिल्ली में निजीकरण हुआ, मैंने यहां से चर्चा शुरू किया था। दिल्ली के निजीकरण के बाद 1 साल के अंदर 45% एम्प्लॉइज को रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। 45% कर्मचारी मजबूर कर दिए गए थे, वह सेवानिवृत्ति लेकर बेचारे घर चले। तब पेंशन मिलती थी। अब अगर कहीं पर निजीकरण होगा और सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किए जाएंगे कर्मचारी, तो भीख का कटोरा लेके सड़क पर खड़ा हो। एक आंसू भी काफी है, एक आंसू भी काफी है हुकूमत के लिए, एक आंसू भी काफी है हुकूमत के लिए। तुमने कभी देखा है आंसुओं का समुद्र बनना? हजारों कर्मचारियों के आंसू जब गिरेंगे तो आंसुओं का समंदर होगा कर्मचारियों पर, जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर का हमला होगा। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि 30 जनवरी की रात तक 12 बजे तक, टाइम लिखा उसमें, रात को 12 बजे तक रिटायरमेंट ले लो, नहीं तो वीआरएस नहीं दिया जाएगा। चंडीगढ़ में 520 कर्मचारी चंडीगढ़ में रेगुलर के काम करते थे। 250 कर्मचारियों ने रिटायरमेंट ले लिया डर के मारे। रात को 12 बजे टाइमिंग लिखा। लोकतंत्र है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है लोकतंत्र। 250 कर्मचारियों को रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर दिया गया चंडीगढ़ के अंदर। जिन 250 कर्मचारियों ने रिटायरमेंट नहीं लिया, जानते हैं वो बेचारे कौन है? वो रिटायरमेंट ले लेते तो उनको पेंशन ना मिलती, वह पेंशन के दायरे में नहीं आते, नहीं तो वो भी डर के मारे रिटायरमेंट लेके अपने अपने घर चले गए होते। दिल्ली के कर्मचारी बैठे हुए हैं हमारे बीच, उनके लीडर्स बैठे हुए, वह दिल्ली का दर्द बता सकते हैं। कंज्यूमर्स का दर्द तो बहुत भयानक है। कितने किस्म के चार्जेस लगते हैं, यह जानकारी भी आपको मैं देना चाहता हूं कि जहां सरकारी क्षेत्र की कंपनी का सीएजी ऑडिट होता है, जब बिजली की दरें तय करने के लिए एआरआर सबमिट किया जाता है कि हमारा रेवेन्यू रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम अपने खर्चे बताते हैं और अपनी इनकम बताते हैं, और हम कहते हैं हमारी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा हैं, इसलिए टैरिफ थोड़ा सा बढ़ा दिया है। लेकिन जो हम खर्चे बताते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनी, उन खर्चों का ऑडिट होता है, उन खर्चों का ऑडिट होता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां खर्चे बताती हैं, उनका कोई ऑडिट नहीं होता, उनका सीएजी ऑडिट नहीं हो सकता, उनका कोई ऑडिट नहीं होता। वह जो खर्चे बताती हैं, वह खर्चे किस पर लोड किए जाते हैं? आपके ऊपर किए जाते हैं। कंज्यूमर से वह खर्चा वसूला जाता है जो खर्चे फर्जी होते हैं। दिल्ली में मुझे बताया गया टाटा की कंपनी जो टैरिफ फाइल करती है, उसमें 25 से 30% तक खर्चे बढ़ा के बता देती है। सेटिंग है उनकी, रेगुलेटरी कमीशन 10 से 15% कटौती कर देता, तब भी उनका 15% उनके पॉकेट में जा रहा है। सेटिंग है। तो ऐसे सारे माहौल में जहां कर्मचारियों पर नौकरी जाने का खतरा है, जहां कर्मचारी जो सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी बन के आए थे, उनके ऊपर निजी क्षेत्र की तलवार लटकाई जा रही है, और जो आउटसोर्स एम्प्लॉई बहुत बड़ी तादाद में आज पूरे देश में, साथियों आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं, 27 लाख बिजली के कर्मचारी हैं पूरे देश में। इसमें 15 लाख कर्मचारी रेगुलर हैं और 12 लाख कर्मचारी आउटसोर्स एम्प्लॉई है, जिनको 10,000 रुपया मिलता है। प्राइवेटाइजेशन आने के बाद तो वो सीधे एक ठोकर में बाहर कर दिए जाने वाले, बाहर निकाल दिए जाने वाले, यही हर जगह हुआ। तो यह ना कंज्यूमर्स के हित में है निजीकरण, ना निजीकरण कर्मचारियों के हित में। मीटरिंग, स्मार्ट मीटरिंग, प्रीपेड मीटरिंग किसी के हित में नहीं। आपकी बिजली कट जाएगी, मीटर तेज दौड़ता रहेगा,
प्राइवेट कंपनी के पॉकेट में अपने आप रेवेन्यू आएगा, ना उनको मीटरिंग की जरूरत होगी, ना उनको बिलिंग की जरूरत होगी। और मीटरिंग और बिलिंग के सेक्टर में काम करने वाले सैकड़ों हजारों कर्मचारियों की सेवाएं वन गो में, एक स्ट्रोक में खत्म हो जाए, उनकी सेवाएं समाप्त हो जाए। यह किसी के हित में नहीं। मैं यह प्रस्तावित करता हूं, मेरा यह विचार है, सुझाव है आपको कि आप यहाँ पे निर्णय लें और अप्रैल के महीने में किसी दिन दिल्ली में एक बड़ी रैली का इंतजाम किया जाए। हम आप बातचीत कर लेंगे अगर आप उचित समझेंगे तो, जिसमें कंज्यूमर भी हों, जिसमें किसान भी हों, जिसमें बिजली का कामगार भी, और यह सब स्टेक होल्डर जिस दिन राजधानी की सड़कों पर आएंगे। या सड़कों पर आना क्यों जरूरी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, इसी दिल्ली में लोहिया जी रहते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, जब सड़क खामोश हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। यह संसद का जो आवारापन है, यह जो राजनीतिज्ञों का आवारापन है, इनके आवारापन को रोकने के लिए क्या करना होगा? सड़क की खामोशी तोड़नी। और सड़क की खामोशी तोड़ने के लिए राजधानी दिल्ली की सड़कों पर हमें मार्च करना होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है हमारे सामने। यह प्रस्ताव मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, आपने समझ लिया, आपने मुझे इसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया। मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देता हुआ इसका उद्घाटन करने की कोशिश कर रहा हूं। एक विपरीत परिस्थितियों में मैंने प्रारंभ यही से किया था। यह सम्मेलन हो रहा है। दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियां हैं, हवा तो है ही मुखालिफ, मुखालिफ का मतलब विपरीत। हवा तो है ही मुखालिफ, तू डराता है क्या? हवा तो है ही मुखालिफ, तू डराता है क्या? लेकिन हवा का रुख देखकर कोई दीपक जलाता है क्या? तो यह दिया, यह बिजली कर्मचारियों का, बिजली उपभोक्ताओं का एक साथ चलने का, एक साथ मार्च करने का यह दिया आज यहाँ पर 5 मार्च को दिल्ली के इस सभागार में इस टार्च को हमने प्रज्वलित कर दिया है। इस मिसाल को हम उठाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों, मैं इस सम्मेलन के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा करता हूं। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। अभी मेन रेजुलेशन हमारा महासचिव इधर रखेंगे। अनुकुमार जी। Services, worldwide communication network, aviation system, agriculture sector, health and education care, etc. are inseparably linked with the electricity. In a world, it is almost like water and air. For that reason, availing of this facility is fundamental right of all citizens, irrespective of economic status. The convention expresses deep concern that the BJP-led central government in power has taken all-out measures to privatize the power sector built up at the cost of public exchequer through various means for the interest of the corporate, jeopardizing the interest of the common consumers, peasants and employees at large. This convention cannot but observe that after Independence, Electricity Supply Act 1948 was enacted with a view to supply electricity on no loss, no profit basis, considering its character as an essential utility. But after formation of nationwide basic network of electricity at the cost of public money
and the immense contribution of the state electricity boards, the central government was enacted the Electricity Act 2003 for the interest of the private owners, which opened the floodgate of privatization of power generation in our country. These private power producers are compelling the state-owned distribution companies to purchase their electricity at higher rate through unfair power purchasing agreement with the direct patronization of the government, causing untold sufferings to the common consumers. This convention takes note that expresses experience of privatization of power sector in home and abroad has proved futile. This has also been failed miserably to provide benefits to the consumers, peasants, and employees of the country. It has fattened the coffer of the corporates using the public property. This convention also views after electricity generation, the corporate sectors have come forward to take their control over the electricity distribution system across the country and for their interest in the Electricity Bill 2022 has been drafted, but in the face of stiff resistance of the consumers, peasants and employees, the central government could not enact the bill so far. The convention also deals with deep anguish, keeping in pipeline the sad retrograde bill. The central government has further moved aggressively to privatize the electricity, privatize the state-owned distribution company through installation of prepaid smart meter, and for this purpose, revamped distribution sector scheme. The pertinent questions are: A. Is the existing digital meter is unable to measure the enact consumer consumption of electricity, whether it has been proved absolutely through any scientific experiment? Answer is no. Then why this move? For those who interest, the central government has initiated to install the prepaid smart meter at the cost of huge expenditures, certainly for the interest of the profit-making corporates. Friends, the considered opinion of this convention, prepaid smart meter is an all-out heinous design to exploit the common consumer ruthlessly, only to serve the interest of the corporates. For aware of this common consumers, we are mentioning the salient anti-consumer features of the prepaid smart meters. 1. Present system, first consumption, thereafter payment. In case prepaid smart meter, first payment, thereafter consumption. It is a clear violation of the existing contract of consumers being enjoyed since last 75 years. Power supply will be automatically disconnected at any time, even at midnight, after consumption of electricity against the deposited money. As per existing act, distribution company has to serve notice before 15 days of disconnection. So it is clear violation of section 56 of the Electricity Act 2003. The most dangerous is after installation of prepaid smart meter, TOD, time of day, tariff and dynamic pricing system will be introduced. What does it mean? Tariff will be linked with the demand of the market during the peak hours. Cost of electricity per unit will be too high. Fourth one, private operators will control the entire network of prepaid smart meter using the infrastructure of the government companies without any investment. Fifth one, enlisting digital meters
existing digital meters will be thrown away and several crores of money will be incurred for installation of prepaid smart meters. Incurred for installation of prepaid smart meters. The sixth one. Existing subsidies will be abolished, causing serious hardship to the commoners. This convention thinks installation of prepaid smart meter has come in being for swelling of private capital, defeating the social objective of electricity. Friends, we all know that electricity is a concurrent subject of the central and state governments. The state governments are not under any compulsion to take the course of privatization of private power sector and installation of prepaid smart meter in accordance with the direction of the central government. This convention seriously takes note of the fact that following the path of the central government, major state governments, irrespective of color, have started privatization of power sector and installation of prepaid smart meter for the interest the private owners. Besides that, they are also increasing the tariff of electricity, imposing various charges, causing distress to the common consumer. So, to build up simultaneous sustained movement against the central and state government who are creating the power sector is a hunting ground of the corporates is the need of the hour. The convention like to draw the attention of this August House that against privatization of power sector and installation of prepaid smart meter, serious resentment have developed among the consumers and the employees are as well in many states. Consumers are waging valiant struggle under the banner of state level consumer association led by All India Electricity Consumer Association. But we should not forget for the single moment the central and the state governments have not repealed their aforesaid heinous design as yet, rather they have taken more aggressive steps to their objective. In some state, ESMA has been promulgated in course of movement against private to crush the movement against privatization of power sector and installation of prepaid smart meter. So demand of the situation is to intensify the movement. The convention cannot but recall the historic movement of the peasants of our country who compelled the central government to withdraw the three anti-farmer acts unconditionally, sacrificing the lives more than 700. Yes, they also played an important role to prevent the central government from enacting the Electricity Bill 2022. Taking lessons from it, we have to build up mighty movement comprising the consumers, peasants and employees in the days to come, and with this objective, we are holding this national convention. Under the above background, this convention fervently appeals to all sections of consumers to make success the movement mentioned herein under to serve this core sector from the aggression of the monopolists, which the paramount importance of the day. First one, observance of protest week from 1st April to 7th April 25, organizing demonstration, agitations, etc. Before the office of the electricity distribution companies, intensive campaign has to be launched, publishing leaflet, pamphlet to aware the common consumers about the distress effect of privatization of power sector and installation of prepaid smart meter. Number 2,
from 1st April to 14th June 25, signature collection program will be conducted from the common consumers across the country. Third one, within 6th June to 21st June 25, memorandum will be submitted to the Central Energy Minister through the Governor of the respective state. Memorandum also has to be submitted to the state energy ministers. The fourth one, All India Electricity Consumer Association will extend all out support and solidarity to the strike of the electricity employees called by the National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers on 26 June 25 against privatization of power sector and installation of prepaid smart meters. Thank you very much. Now it will support by Mr. Ajay Acharya. Respected President of this convention and dignitaries on the dais and other leaders on the dais and consumer delegates from all over the country present here. Already the main resolution you have heard, and I think you got the copy also. And I consider this resolution reflects all the main points which is the main problem in the present day in the power sector and the consumers facing nowadays. So this resolution is, I think, timely and proper. In the proper way it is tabled. Friends, it is clearly mentioned that the present government repeatedly trying in different way, to hand over the power sector to the corporate houses. Why? We know it is an essential service, and we are observing just after 1991 when globalization, liberalization, this type of economy is introduced. After then, all the service sector gradually handed over to private companies, corporate houses, because facing the market crisis, the capitalist class and corporate houses, they are interested to take over all the service sector. We are witnessing, you all are witness about the education sector, about the health sector. Nowadays, entire education system is under private control. Entire health sector, almost entire health sector is also controlled by the corporate sector. Now they want to take over control of electricity sector, because there is only in the service sector there is guarantee for profit. They want to profit. That is why they are pressing government, they are influencing government, and government wants to serve their interest. So it is a dangerous phenomenon, dangerous trend. We have to resist it. Almost in all the states, same thing is happening. In Assam also we are observing
the government gradually tending towards privatization. For that purpose, they are trying to they're installing 25 crores of smart meter. Why this smart meter? Only for corporate interest. And this smart meter is linked with privatization. So main danger in power sector is the threat of privatization. So I think the resolution is here placed is timely, and we have to organize movement focusing privatization of the power sector throughout the country. We have to strengthen this movement throughout the country, collaborating with power sector employees and farmers. We should organize this movement and strengthen this movement with this. And again, I support this resolution. With this, I conclude my speech. I am requesting Ashok, former Deputy General Manager, head and patron, All India Power Engineers Federation. I am requesting Mr. Rao to place his valuable deliberation to the delegates of this convention. माननीय शैलेंद्र दुबे जी, समीर सिंगला जी और मंच पे बैठे हुए महानुभाव और साथियों, मेरा ख्याल है हिंदी में बोलना ही ज्यादा उचित होगा। जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ गांव ले जाती थी हमें। वहां गांव में कोई बिजली नहीं थी पर जिंदगी बसर चलती थी। पर आज गांव में गरीब से गरीब आदमी भी बिजली के बगैर नहीं रह सकता। कारण उसके स्मार्टफोन में उसका बेटा जो दिल्ली में काम कर रहा है वो फोन करता है, वो फोन तभी चार्ज होगा जब बिजली हो, या उसकी बहू से या पोते पोतियों से वो बात करती है। तो आज गांव में भी बिजली के बगैर रहना मुश्किल है, बेशक बत्ती ना हो। इसी तरह अगर आप 20वीं मंजिल में है बिल्डिंग के, अब शहर बढ़ रहा है, 20वीं मंजिल में अगर बिजली ना हो तो ना आपके पास पानी आएगा, ना आप नीचे उतर पाओगे। तो कोई भी आजकल सड़क पे देखिए नीली बसें चल रही हैं बिजली के, बसें बंद हो जाएंगी, मेट्रो बंद हो जाएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जमाना था जब हम बच्चे थे, गांव में मेरी माँ ले जाती थी, जिंदगी बसर होती थी बिजली के बगैर। पर आज बिजली के बगैर जिंदगी बसर नहीं हो सकती। बिजली हैज बिकम ए एसेंशियल कमोडिटी, जस्ट लाइक वाटर और एयर। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिकॉग्नाइज। और जब एसेंशियल कमोडिटी को आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, तो उसका अलग मीनिंग है। जबकि इस इंस्ट्रूमेंट को आप प्राइवेटाइज कर दें और एसेंशियल कमोडिटी को प्राइवेटाइज कर दें, इन दोनों में बहुत अंतर है। और सबसे पहली बात हमें ये समझ आनी चाहिए कि जब सरकार प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की बात करती है तो वो एक एसेंशियल कमोडिटी की निजीकरण की बात कर रही है। इन अदर वर्ड्स, it is privatizing the one of the pillars that is supporting our life. It is privatizing one of the pillars that is supporting our life. इसका सिग्निफिकेंस ये है, एक कमोडिटी एक सर्विस का नहीं है, एक पिलर ऑफ लाइफ है। जो आदमी 20वीं मंजिल में है उसके लिए तो पिलर ऑफ लाइफ है। जो गाजियाबाद से दिल्ली आता है नौकरी करने, उसके लिए एक पिलर ऑफ लाइफ है।
ये सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात जो हमें बहुत जरूरी बात से समझने की बात है कि आज हमारे देश में दो भारत बन रहे हैं। There are two Indias being made. One India of the rich, one India of the poor. There is no longer one India. India of the rich, India of the poor. Every sector of the economy is being divided between these two, partition between these two, the India of the rich, India of the poor. You want a hospital, go to Max, go to Fortis, or go to Safdarjung Hospital, which is a government hospital. You can't even enter it. It is overcrowded, understaffed. It is almost impossible. You may not even survive. If you want to survive, you have to go to private hospital. If you go there, today the cause of indebtedness is health. आप कोई भी सेक्टर ले लीजिए, एक गरीबों का सेक्टर बन रहा है, एक रईसों का सेक्टर बन रहा है। अब में यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसके पास गाड़ी है, कितनों के पास गाड़ी है जो 80 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पर चलती है? मेरे पास तो है नहीं। और सड़क देखिए जो बन रहे हैं, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव, इन पे आप 50-20 किलोमीटर पे सब गाड़ी नहीं चला सकते। आपकी गाड़ी बाहर निकाल दी जाएगी। आप स्कूटर पे नहीं जा सकते। आप कोई अपने वाहन, जो हम लोगों के पास वाहन है, उस पे नहीं जा सकते आप, क्योंकि दीज आर हाई स्पीड रोड्स। एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, मर जाओगे। अगर आप ये हाई स्पीड रोड्स पे टू व्हीलर पे जाओगे, जिंदा नहीं निकलोगे। तो चाहे आप सड़क देखिए, चाहे आप कोई भी चीज देखिए, हर चीज में दो इंडियाज बन रहे हैं। एक इंडिया ऑफ द रिच, एक इंडिया ऑफ द पुअर। स्कूल, आज सबसे बड़ा खर्चा, किसी गरीब आदमी से पूछे तेरा सबसे बड़ा खर्चा क्या है? जी मैं अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजता हूँ जहां मुझे फीस देना पड़ता है, ताकि उनको अच्छी तालीम मिले। अच्छी तालीम मिलती है नहीं मुझे पता नहीं, पर फीस तो जरूर देता, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजना चाहता। वो भी सोचता मैं तो गरीब हूं, मैं बच्चे को रईस बना स्कूल में भेजू जहाँ पैसे। तो हर चीज में विभाजन हो रहा है, पार्टीशन हो रहा है। एक रईसों का इंडिया, एक गरीबों का इंडिया। तो हम कहेंगे कि ये जो रईसों का इंडिया है, ये क्या रईसों के पैसे से बन रहा है? नहीं, ये गरीबों के पैसे से बन रहा है। ये समझिए, ये बहुत जरूरी बात है जो समझने की बात है। आप ध्यान से समझिए इस बात को। मैं एक कप चाय पीता हूं, अंबानी एक कप चाय पीता है, और जो वहां रिक्शा वाला जो चला रहा है रिक्शा, गर्मी में रिक्शा चला रहा है, वो भी एक कप चाय पीता है। हम तीनों एक ही जीएसटी देते हैं, एक ही जीएसटी देते हैं। वो गरीब से गरीब आदमी जो रिक्शा चला रहा है और अडानी दोनों एक ही जीएसटी देते हैं। टैक्स अलग नहीं है दोनों का। गरीब का टैक्स उतना ही है जितना रईस का टैक्स, क्योंकि जीएसटी है। और आप ये समझिए कि मेजॉरिटी ऑफ द मनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट इज फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस से नहीं है। और 138 crore people are indirect taxpayers. Indirect taxpayers 138 crore। भी गरीब हो, कपड़ा खरीदेगा, वो कुछ न पानी खरीदेगा, वो चाय पिएगा, कुछ ना कुछ तो लेगा, पर चावल खरीदेगा, हर एक चीज में जीएसटी देगा। और डायरेक्ट टैक्स पेयर जो इनकम से टैक्स देते हैं वो 7.8 करोड़ है, मतलब 8 करोड़ से कम। 138 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं और 7.8 करोड़ डायरेक्ट टैक्स पे। तो पैसा सरकार को किससे आ रहा है? गरीब से आ रहा है, रईसों से नहीं आ रहा है। और ये भी जो 7.8 करोड़ ये जो है, ये इनकम टैक्स फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, पर एक्चुअल टैक्स 1.5 करोड़ देते हैं। अब समझिए पूरे हिंदुस्तान में
only 1.5 crore people actually pay direct taxes. Actually pay direct taxes. 138 crore people pay indirect taxes. तो किसके पैसे से ये दो इंडिया बन रहे? ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मतलब हम 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, हम कहते हैं अपने प्रधानमंत्री, और उन्हीं से टैक्स लेते हैं, उन्हीं से टैक्स लेते हैं। जिसको मुफ्त अनाज देने के वोट लेते हैं उससे, उसी को बेचारे को पता भी नहीं कि वो टैक्स दे रहा है। उस गरीब आदमी को बेचारे को पता भी नहीं, ये भाई को ये भी नहीं पता कि ये टैक्स दे रहा है। अगर इनसे पूछे किसे आप टैक्स देते हो, वो कहेंगे नहीं, मैं कौन सा टैक्स देता हूँ। इनको खुद ही नहीं पता कि टैक्स देते हैं। तो ये सबसे पहली बात हमें, चाहे हम बिजली की बात करें या किसी चीज की बात। तो दूसरी बात, जैसे अपने दुबे जी ने कहा कि ये बिजली क्या एक कमोडिटी है या एक सर्विस है। अब इसमें समझने की बात यह है कि जो आज का जो बिजली के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, वो वोट और नोट की पॉलिटिक्स, राजनीति चल रही है। वोट और नोट की राजनीति। जब चुनाव आता है, वोट के लिए कहते हो 200 यूनिट, 300 यूनिट, 250 यूनिट, 400 यूनिट मुफ्त देंगे, और जब वोट की जरूरत होती है तो कहते हैं निजी करो। तो वोट और नोट की राजनीति में कोई भी चीज नहीं सरवाइव हो सकता अगर वोट और नोट की राजनीति है। अरे मुफ्त बिजली कहाँ से दे रहे हो, कैसे दे रहे हो मुफ्त बिजली? मुफ्त बिजली अपने आप पैदा तो नहीं होती ना, नहीं तो बिजली पैदा होके आएगी तभी जाके आप मुफ्त बिजली आएगा। तो वोट और नोट के लिए अब ये बात हो रही है कि शैलेंद्र दुबे जी ने भी बोला कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको प्राइवेटाइज करेंगे, चंडीगढ़ में प्राइवेटाइज या कहीं। और इनका बेसिस क्या है, नारा क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है कि ये एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्राइसेस कम होंगे। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम प्राइवेटाइज कर दें तो प्राइसेस कम होंगे क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 रुपया है तो 80 पैसे जो है वो जनरेशन और आपके डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचने में है खर्चा। जनरेशन और ट्रांसमिशन 80% इज द कॉस्ट, 20% है डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या, कैन द डॉग वैग द टेल? कैन द टेल वैग द डॉग? टेल कैन नॉट वैग द डॉग। हाउ कैन, क्या कितना भी आप इंप्रूवमेंट कर लो, कुछ भी कर लो, कैन 20% मेक ए बिग इम्पैक्ट? द real cost of electricity is not in the 20%, it's in the 80%. 80% is upstream of distribution. अब दूसरा, दुबे जी ने भी जिक्र किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे मोबाइल ये किसी और कंपनी का है, मेरे जेब में एयरटेल का है, ऐसे बिजली में कर दूंगा। अरे भैया, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि ये वायरलेस सिस्टम है, वो वायर्ड सिस्टम। बिजली इज ए वायर्ड सिस्टम, मोबाइल इज ए नॉन वायर्ड सिस्टम, और दोनों को एक बराबर तुलना करने में कोई अकल नहीं है। जिस आदमी को ज्ञान ना हो, मूर्ख हो, वो किसी को भी मिला सकता है, वो कुत्ते को, शेर को, सबको एक बराबर बना सकता है। अगर उसको थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो नहीं कर पाएगा। क्यों 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 नहीं कर सकते हम? आखिर बात इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि ये जो लाइट यहाँ जल रहा है, ये लाइट पावर हाउस से लेके ये लाइट तक एक कंटिन्यूटी चाहिए, एक वायर चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, एक
मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। जो जनरेटर में जो इलेक्ट्रॉन्स चल पड़े वो इस बत्ती में आके एंड हुए। जब तक ये पूरा हाईवे नहीं होगा, जब तक ये पैसेज नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। अब समझ लीजिए ये 4 मंजिल का बिल्डिंग है और 4 मंजिल के बिल्डिंग में पहले ग्राउंड फ्लोर वाले ने ए कंपनी से बिजली लिया, फर्स्ट फ्लोर वाले ने बी कंपनी से बिजली लिया, थर्ड फ्लोर वाले ने सी से लिया, फोर्थ फ्लोर वाले ने डी से लिया। चारों ने 4 कंपनियों से अलग अलग लिया। तो क्या ये होगा कि ये चारों कंपनियां कैसे आपको अलग अलग देंगे? बिल्डिंग तो एक ही है, क्या ये अलग अलग ट्रांसफॉर्मर लगाएंगे? क्या करेंगे? ये कैसे आपको पहुंचाएंगे बिजली? क्योंकि चारों अलग अलग कंपनी है। तो वो करेंगे क्या? वो करेंगे ये कि जो बाहर ट्रांसफॉर्मर है आपके सोसाइटी के बाहर, वो तो वही रहेगा, वायर भी वही रहेंगे, पर आपका पूरा मीटरिंग सिस्टम अलग होगा। हर एक कंपनी का अपना अपना मीटरिंग सिस्टम, और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए, बहुत उसको बिलिंग के लिए बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटराइजेशन चाहिए। इसका खर्चा कौन देगा? इतना आसान नहीं है भाई। आपका बिजली है वो आपके सोसाइटी के कंपाउंड तक तो साथ आ गया, कॉमन आया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 4 ट्रांसफार्मर लगाया, ऐसे नहीं होता है। ट्रांसफार्मर तो वही होगा। आपके जो सोसाइटी का जो बिल्डिंग है उसमें जगह भी नहीं है 4 ट्रांसफार्मर लगाने का, वही ट्रांसफार्मर होंगे, वही तार होगा जो ऊपर जा रहा है फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग तोड़ के नया बिल्डिंग बनाएंगे या कोई नए नए ट्रांसफार्मर, ऐसा नहीं होगा। पर whole thing will be based on a very sophisticated, complicated billing and computerized system. उसका कॉस्ट कौन लेगा? वो कॉस्ट कहां से आएगा? तो ये कहना कि कंपटीशन से का रेट कम, ये बिल्कुल गलत है। ये इसका ये तो आप कुछ भी कह सकते हो कि भाई ये जो आपके दिल में आया आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो जो मर्जी कह दो। पर विदेश में भी एक्सपीरियंस ये रहा है, वर्ल्ड बैंक का स्टडी ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, मैं आपको जस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। Introducing retail competition in this segment of market appears difficult. Metering is expensive and the cost may not be worth below 75 kilowatts. ये वर्ल्ड बैंक का स्टडी है। मतलब below 75 kilowatts the metering is not worth. अब 75 kilowatts is a huge amount. Yes. आपके कैलकाटा के शायद प्रॉब्ली 20 सोसाइटीज या 50 सोसाइटीज का 75 किलो। ये कहना आसान है कि हम ऐसे नहीं होगा। अब इसी ऐसा नहीं है कि वो 4 चंडीगढ़ में 4 प्राइवेटाइजेशन वाले होंगे, एक होगा। और वो क्या करेगा जो बिजली बोर्ड नहीं कर रहा है? फर्क क्या है? दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली में बिजली आने के बाद घाटे कम हो गए, प्राइवेट वालों ने एकदम से इनकम इंक्रीज किया। इनकम इंक्रीज कैसे किया? जल बोर्ड का 600 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ था बकाया। जब तक वो दिल्ली जल बोर्ड था, दिल्ली विद्युत बोर्ड था, वो बकाया गवर्नमेंट के पास था। जिस दिन प्राइवेटाइज हुआ शीला दीक्षित ने वो पेमेंट कर दिया। दिल्ली में चोरी करते थे सैनिक फार्म से, यहाँ रईस से रईस लोग रहते थे, रिचेस्ट ऑफ रिच सैनिक फार्म में रहते थे, चोरी करते थे। इसलिए नहीं कि वो चोरी करना चाहते थे, इसलिए कि कानून ये था कि अगर बिजली अनऑथराइज्ड कॉलोनी में दिया जाए दैट विल बी रिकॉग्निशन ऑफ द अनऑथराइज्ड। So the electricity board could not legally give them electricity, because if they gave them electricity officially as per the law, it would be amounting to recognizing that colony as authorized colony. वो क्या करेंगे? चोरी करते थे। अब
मैं सबसे रईस आदमी हूँ दिल्ली का और मैं चोरी कर रहा हूँ, ये हालत था। अब कोर्ट ने बदल दिया कानून। अरे अगर आप एस्टिमेट करिए ना, ये सारे हिसाब लगाइए, कंपेरिजन शुड बी विद कंपेरेबल्स, नॉट नॉन कंपेरेबल्स। कंपेरेबल्स के साथ अगर आप कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है। और अब ये सिस्टम बदल गए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो। आज सारे स्टेट एंड एक्सक्यूटिव बोर्ड में the collection efficiency is above 95%, 98, 99%. There is not a single state and executive board which does not have a collection efficiency of 98, 99%. And वो जो 2-3% भी है, that is due to court litigation. पेमेंट नहीं करते, कोर्ट में चले जाते हैं, स्टे ले आते हैं. So there are lots of problems. अब पहले theft of electricity बहुत होता था. Now the metering is very accurate. Now there are layers of metering. It is very easy to detect theft. पहले CTPTs को फैक्ट्री के अंदर रख देते थे, वे जाते थे तो you could not enter. आप कैसे दीवार के ऊपर सीढ़ी लगा के तो जंप नहीं कर सकते, और जब तक आप अंदर जाओगे वो अपना CTPT को ठीक कर लेते. तो अब वो पॉसिबल नहीं है. There are so many layers of metering in the system that you will be detected within no time. We don't have to come to your factory to know that you are stealing. So today the systems have changed. Today it doesn't matter whether you are private or public sector. इतना instrumentation हो गया, इतना checks and balances हो गए, इतने layers of policing हो गया, not policing by humans but policing by that it is. अब ये दूसरा, अगर आप ग्लोबल एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं, आफ्टर एग्जाम मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ. After examining 17 studies looking at total factor productivity and 10 studies looking at profitability, in 2009 World Bank review of privatization of former communist and Central East European countries and China concluded that the most important implication of our survey is that privatization per se does not guarantee improved performance. देखिए, मैं ये बहुत जरूरी है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ. मतलब द वर्ल्ड बैंक जो इनका माई बाप है, मतलब आफ्टर गॉड द ओनली ट्रूथ इज फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक in its report on privatization of former communist countries, I'm saying former communist countries because everything was state owned, and that's why I'm emphasizing not as a political category but as a state owned category. After examining former communist countries and East European countries, that means, and China, that means all the countries where there was exclusive state ownership. After examining and doing 17 studies on productivity and 10 studies on profitability, because what are the main things? After doing these studies, and that too on entirely state owned, the conclusion they have come to is that the most important policy implication of our survey is that privatization per se does not guarantee improved performance. अब इससे ज़्यादा क्या proof चाहिए? I mean, this is not some consumer association study. This is a World Bank study. हर चीज के लिए तो आप वर्ल्ड बैंक को कोट करते हो. अब आप दो चीजें और मैं ये चीजें थोड़ा टाइम लेके बताना चाहता हूँ, because I want you to further convey to your consumers. You know, you should be able to take these ideas, and आप हमारे प्रचारक हो. You are our messengers. So you should carry these messages to people. Now, I want to very briefly talk also about solar energy. What is happening with solar energy? अब solar energy में क्या हो रहा है कि what the government of India has done is given huge centralized solar power plants.
Adani in Gulf of Kutch in Gujarat has been given land which is almost 3/4 of Bombay, the size of the land given. These huge centralized generation plants have been set up in the name of solar. These are not decentralized. These are centralized plants. अब इसके statistics सुनिए. Just these are not my statistics. These are government statistics. The centralized generation plants generate 67,929 MUs units during the first 7 months of 24-25. Very recent statistics. This implies that only 14.6% of the energy of these solar power plants, that means 100% capacity, only 14.6% is getting injected into the grid in the conversion. Now, considering that 15 to 16% was lost through T&D losses, at the consumer end, they receive only 12.5% of what is generated in the sun. So it is not as if solar energy, see, अगर एक package मेरे सर के ऊपर है, मेरे घर के ऊपर है, the losses are much less. But here, the total losses are such that what is finally received out of the generation plant is only about 12.5%. No, this is not the end of the story. End of the story is that these people who are setting up these large plants are not responsible for grid stability. अब होता क्या है कि आपका धूप खूब जोर से धूप चल रहा है, बिजली पैदा हो रही है, एकदम से बादल आ गया, एकदम से बादल आ गया तो एकदम से बिजली बंद हो गया, एकदम से बिजली बंद हो गया तो ग्रिड में इतना बिजली चला गया, अब ग्रिड कोलैप्स हो जाएगा, ग्रिड कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि एकदम से इतनी बिजली. पर इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, क्योंकि एनटीपीसी के 800 मेगावाट को आप फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं भगा सकते. छोटे छोटे प्लांट्स जो है उनको आप ऊपर नीचे कर सकते. तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, दे आर द वंस एंड दे आर नॉट बीइंग कॉम्पेंसेटेड. Who is responsible for the grid stability? It is these state electricity board and their small little plants. And when you see their plant load factor, that is 12%, 15%, 20%, और ये विशेषज्ञ यहाँ कहते हैं ये तो बड़ा inefficient है. It's not their inefficiency. Anyway, these are all technical issues. Now, there is one more thing I would like to tell you, that in India we have a very peculiar system, जो पूरे world में नहीं है. Profit linked incentive, production linked incentive, profit linked incentive. अब ये incentive जो है, why should there be an incentive? आप production करना चाहते हो करिए, profit बनाना चाहते हो बनाइए. Why should the public pay for it? But the profit linked incentive, subsidies provided to profit earning companies is about 20,000 crores in the case of solar energy. The viability gap funding of subvention is about 6,000 crores. Now, finally, before I conclude, I would like to say a few words about the smart meter, because so much is talked about smart meter, and one of the big issues you put there is smart meters. Now, as on 2022, there are 26.7 crore domestic consumers. The residential sector accounts for about 30% of the final consumption of energy. By end of 22-23, almost 89% of the domestic consumers receive zero bill. Yes, suniye carefully. By end of 22-23, almost 89% of domestic consumers receive zero bill. This is very important to note because of various incentives you are giving, because of various poverty. See, एक जिसके पास एक छोटा सा झुग्गी में एक फैन और एक लाइट है, he is also a domestic consumer. In the records of the electricity board, he is also a domestic consumer. So, out of your 27
26.7 crore domestic consumers, 89% of domestic consumers receive zero bill. Why then is this extreme priority for investing on smart meters? If that is the statistics, then why is this obsession of putting these smart meters? Now, the government of India's budget for smart meter is estimated at 1.5 lakhs in the next financial year. Now, the question is, why this obsession to put smart meters? One is that they want to reduce time of day metering. पहली चीज है कि ये स्मार्ट मीटर पे इतना जोर क्यों हो रहा है? आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है ये भी स्मार्ट मीटर है, ये कोई नॉन स्मार्ट नहीं है, ये भी स्मार्ट मीटर है, खाली ये रिकॉर्डिंग नहीं करता है, डेटा नहीं रिकॉर्ड करता है, नहीं तो सेम चीज है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, ये दोनों। तो ये स्मार्ट मीटर की जरूरत क्यों है? जरूरत ये है कि एक टाइम ऑफ डे मीटरिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करना। टाइम ऑफ डे का मतलब ये है कि सारे घरों में बिजली नहीं चल रही, सारे घरों में बिजली नहीं चल रही, सारे घरों में बिजली बंद, बट शाम को 6 बजे अंधेरा हो जाएगा सारे घरों में। दैट विल बी अ पीक आवर। गर्मियों में जब एसी शुरू हो जाएंगे तो प्रॉब्ली आफ्टरनून विल बी पीक मोर देन एनी अदर टाइम, क्योंकि सारे दफ्तर बंद हो जाएंगे शाम को। मेजॉरिटी ऑफ ये जो सोलर ये एयर कंडीशनिंग लोड कम हो जाएगा, तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो टाइम ऑफ द डे मीटरिंग का मतलब ये है कि वी चार्ज यू मोर when it is peak hour, when you consume in peak hour, we charge you less when it is not peak hour. So we have different tariffs. So when you will be billed according to how much you have consumed at each hour. कितना आपने अलग अलग घंटों में यूज किया है, उसकी बेसिस पे आपका बिलिंग होगा। अभी आपका बिलिंग होता है कितना आपने कंज्यूम किया। अब ये पॉसिबल नहीं है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीटर से, ये पॉसिबल है only when you have a smart meter. Then only it is possible to do this time of day meter. And this time of day metering they want to introduce. अब वो कहाँ तक सक्सेसफुल होगा अगर आपका 89% डोंट पे एनी बिल एट ऑल। अब इसका पर्पस क्या है मुझे समझ नहीं आया। और दूसरा है प्रीपेड मीटर। अब प्रीपेड मीटर के साथ in South Africa, in Soweto, there were riots because सबने एक टाइम जाके बिल लगाया मीटर और पे कर दिया, और रात में अंधेरा हो गया, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सोवेटो डार्क हो गया, तो उन्होंने निकल पड़े से डंडे डुंडे लेके और राइट्स हो गए वहां सोवेटो में। तो कई जगह वर्ल्ड में राइट्स हुए हैं शुरू में जब ये स्मार्ट मीटर इंट्रोड्यूस हुआ। बट मोर देन दूसरा, ये जो इतने हजारों करोड़ लगा के आपका स्मार्ट मीटर आपके घर में लगा रहे हैं, आपका मीटर ले जाके लगा रहे हैं, इसका रिप्लेसमेंट कौन करेगा? ये तो 10 साल में ये नया मीटर लाइफ ऑफ मीटर 10 साल के, उसका बर्डन किसके ऊपर होगा? क्या सरकार दोबारा लगाएगी या आपको लगाना पड़ेगा? इसकी क्लैरिटी कौन देगा? पर सबसे पहले तो हमने सरकार से ये पूछना है कि आप स्मार्ट इंडस्ट्री को कोई स्मार्ट मीटर, वो तो ऑलरेडी स्मार्ट मीटर होता है, उनका सीटीपीटी मीटर होता है, इंडस्ट्री को नहीं कोई जरूरत होती है। आपका होटल है, होटल में कोई स्मार्ट मीटर नहीं होता है, जहाँ कंजम्पशन बहुत हाई होता है वहां ये स्मार्ट मीटर की बात नहीं हो रही है। स्मार्ट मीटर की बात हो रही है छोटे कंज्यूमर्स की। स्मार्ट मीटर इज ओनली रिलेटेड टू स्मॉल कंज्यूमर, डोमेस्टिक एंड कॉमर्स। दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, अगर अशोका होटल में कोई स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा, देयर ऑलरेडी देयर एंटायर मीटरिंग इज डिफरेंट। आपके घर के जैसे नहीं है मीटर अशोका होटल में या किसी फैक्ट्री में या कहीं, वहां तो टोटल मीटरिंग सिस्टम ही अलग होता है। तो ये जो छोटे छोटे कंज्यूमर्स हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हो, पर
ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते ना। एक तरफ आप कहते हो हम फ्री बिजली देंगे, तो दूसरी तरफ आप करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के मीटर, स्मार्ट मीटर लगा रहे हो। इसका मतलब क्या है? What is the sense in this? It's again vote and note politics. स्मार्ट मीटर वाले से नोट और बिजली फ्री देने से वोट। अब ये वोट नोट पॉलिटिक्स के साथ कौन सा सिस्टम चल सकता है? दुनिया में आज तक कोई सिस्टम नहीं चला है। It is not possible for any nation or any system to progress on these two bases. What is the basis of the smart meter? The government has an obligation to explain to us, because all this investment which they are making of thousands of crores is from our budget, from the money we pay as GST. हम GST से जो पैसा दे रहे हैं, हम जो टैक्सेस दे रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर, और हमें ये भी नहीं बता रहे हैं कि क्यों लगा रहे हो आप स्मार्ट मीटर, इससे हमें क्या फायदा होगा, देश को क्या फायदा होगा। अच्छा छोड़िए हमारे फायदे की, हम गवर्नमेंट से ये पूछना चाहते हैं कि देश को क्या फायदा होगा, बिजली बोर्ड को क्या फायदा होगा। आप स्पेसिफिकली बताइए, अगर आज बिजली बोर्ड 100 करोड़ कमा रहा है, स्मार्ट मीटर के बाद ये 150 करोड़ कमाएगा, लेट देम गिव एन एस्टिमेट। हम भी अकलमंद है यार, हम भी पढ़े लिखे हैं, हमने भी नौकरी की है, हम वेरीफाई करेंगे उनके एस्टिमेट को, हम वेरीफाई करेंगे, हम देखेंगे करेक्ट है या नहीं। बट हाउ कैन यू, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैया आप हमें बताइए कि which are the sectors of the consumers that you are wanting to put smart meters? By putting smart meters, what is the extent of revenue increase you are expecting? And what is the interest on the money that you have invested on smart meters? Arithmetic दीजिए ना, make an audit. Let us have an audit of smart meters. My request to the Consumer Association is, we demand from the Government of India and the state governments, give us an audit of smart meters. What are you spending and what are you gaining? As a board, forget about me, what I gain or what I lose, I'll fight my own battles. But I want to know as a citizen of India. So friends, I want to conclude by saying that the day and age of workers and other consumers fighting separately is over. It is over. Neither of them will get anything. It is only possible if they come together. कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बेचारा कंज्यूमर को तभी पता लगता है कि बिजली नहीं है जब नहीं होता है, या जब उसको शॉक लगता है, नहीं तो उसको नहीं पता लगता कि बिजली है या नहीं। ये ऐसा इनविजिबल चीज है, either you know when you get a shock or when it is not there. And जब तक एम्प्लॉई और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि lot of employees organizations and employees lost their credibility because of petty corruption. Let us accept it. They must put an end to it, at least temporarily. And consumer must come forward and give up their grievance. अरे वो मेरे पास बड़े बदतमीजी से बात करता था, अरे छोड़ यार बदतमीजी से अच्छी तरह से बात कर, आगे निकल नहीं तो तेरा नुकसान हो गया। Well, let us give up each other, abusing each other, and let us come together. It is not possible to fight this battle unless we fight it together. I am convinced about it, and I have no doubt that it is not possible. We have to come together. That is the necessity. There is no alternative. So therefore, I really commend that you have asked Mr. Dubey to come and inaugurate this meeting. That's a very good first step. And let us hope that this first step leads to the next step. And Mr. Dubey has suggested a rally at Ramlila ground, but that should lead to the third step of organizing together in every state. And that is only possible if you talk to each other. It is not possible if you don't talk to each other.
It is the responsibility of the consumers to talk to the employees. It is the responsibility of employees to talk to the people. जब तक ये नहीं होगा कुछ नहीं होगा. Thank you very much for inviting me. I'm extremely grateful to you for giving me this opportunity. Thank you. मिस्टर राव, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत महत्वपूर्ण बात रखा है. अभी सॉलिडारिटी रेजुलेशन पेश करेंगे मिस्टर सुब्रत विश्वास. Respected Presidium and the sitting on the dais and all the delegates. All India Electricity Consumers Association AIECA National Convention, Shaha Auditorium, 5th March 25th, Delhi. Resolution declaring solidarity with the movement of the electricity employees and engineers. The National Convention of the Electricity Consumers Association Organization by All India Electricity Consumers Association AIECA takes solidarity note that takes seriously note that the electricity employees and engineers have been waging a series of movements in various states over the years against the privatization of power sector. In the course of building up these movements, they have also been victims of manifold attacks unleashed by these governments. This convention notes with deep concern that to foil the just and legitimate movement of the electricity employees and engineers against the privatization of the power sector, the central and many states governments have promulgated ESMA to achieve the design of the monopoly capitalists. This convention finds no words strong enough to condemn the retrograde and of the central and state governments, irrespective of political color, in favor of privatization of power sector and installation of prepaid smart meter, jeopardizing the interest of the common people. This convention would like to highlight that the central government has already handed over the profit-making government-owned Chandigarh Power Utility to RPG Group at a throwaway price without any consultation with the stakeholders. Similar attacks have been unleashed on Purvanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited and Dakshinanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited of Uttar Pradesh. It is very praiseworthy that the electricity employees and engineers are conducting a powerful movement forming a Mahapanchayat along with the common people, ignoring the threat of ESMA in Uttar Pradesh. The Rajasthan government has also started the process of privatization to serve the interest of the private owners. Besides that, major state governments, irrespective of political affiliation, have started to install the prepaid smart meters, which is a part of the comprehensive design to privatize the state-owned distribution companies. This August convention observes that all over the country,
the electricity employees and engineers are conducting sustained struggle in defense of the interest of the electricity employees, engineers, and the common consumers at large. Under the banner of National Coordination Committee of Electricity Employees and Engineers, NCCOEEE, against the privatization of power sector and installation of prepaid smart meter. In this background, this convention expresses solidarity with the struggle of the electricity employees and engineers and fervently appeals to the people at large in the days to come to form mass committees from the grassroots level, comprising the employees, engineers, common consumers, small traders, and peasants, in order to build a mighty resistance movement against the privatization of power sector and installation of prepaid smart meters. That's all. Now this resolution, seconded by Mr. Jason May. On the occasion of this National Convention of Electricity Consumers, organized by our beloved organization, All India Electricity Consumers Association, respected invited guests on the dais, and the leaders of the AIECA on the dais, and the delegates from different states of the country. I wholeheartedly support the resolution placed by Mr. Subrat Biswas here. I, on behalf of All India Electricity Consumers Association, I appeal to all the delegates present here to come forward with the electricity employees and engineers at their own states to build up a united movement. So I hope you will perform and organize the united movements along with electricity consumers and electricity employees and engineers. Thank you to all. I concluded my support. Now I am requesting Mr. Bimal Das, former Deputy General Manager, Assam Power Development Corporation Limited, and also advisor, the All Assam Electricity Consumers Association, to place his valuable discussion in this house. Comrade Bimal Das, Mr. Bimal Das. Respected Shri Sapon Ghoshji, President All India Electricity Consumer Association,
Shailendra Dubey, already he has left. Sri K. Ashok Rawalji, Patron All India Power Engineers Federation and Chief Patron of National Confederation of CPSUs. All the distinguished guests present at the dais, as well as consumer activists and brothers and sisters coming from all parts of the country. It is indeed a privilege on my part to have the opportunity to associate myself on behalf of all Assam Electricity Consumer Association on this national convention against privatization of power and anti-people prepaid smart metering and electricity bill 2022. But we could get up today that it is left already. A new bill in the form of electricity bill 2025 is coming. That we know today actually. Anyway, since our school days, we knew that democracy is of the people, by the people. But in the present context, it appears to be not for the people in its letter and spirit. Therefore, common people have to come forward and fight against the anti-people policies. Here, irrespective of caste, creed, religion, language, culture, who have come from various parts of the country to register their protest and to send a loud and clear signal to the government in power about its anti-people policies. Electricity is an essential service and a basic need in every walk of life, be it in the field of education, agriculture, health, communication, industry, transportation, or household use. Therefore, the government's responsibility and obligation in a matter of electricity is enormous. But it is totally opposite. The government is trying to shirk its responsibility by the way of making it a hunting ground for corporate and private sector by affording them various incentives and opportunities. The larger interest of consumers and general people are almost given a farewell. It is really distressing that government is reluctant to give due importance for benefit of the common people it deserves in the this primary sector service. The Electricity Act 2003 that was brought in the name of quality power supply at affordable rate, but it proves to be wrong. Another this, now the electricity bill 2003, although it is left by now, it is a bit further to that attempt to lure the private sector at the cost of the interest of the consumers. The nationwide infrastructure developed with public money has been made available to private players to run their business to earn profit. Electricity cannot be a commodity of commercial nature to earn profit. Government has injected huge public money in yesteryears and is injecting even now huge public money under different schemes in transmission and distribution infrastructure. Obviously, the fruit of this public money should go to the common people. But the intended provision of the electricity bill 2020, although it is becoming in the news, is aimed to make way for private players to derive benefits from these infrastructures. The government itself is engaged in favor of private players and privatization and private players and privatization instead of ensuring benefits of public money invested infrastructure to the benefit of the people. In Assam, we have a different picture actually. In Assam, we are experiencing increase in tariff each and every year.
due to mismanagement of distribution company. Although this company is a state-owned company, it is 100% owned by Government of Assam company, not private company. The regulatory framework in Assam has not been able to do justice to the cause of the consumers and to hook the distribution company for its lapses and failure to perform. The introduction of smart meters, which are of the same power measuring standard with the existing digital meter, is a supplier and corporate free smart meter and the existing digital meter. There are two components. This meter reading could be gathered. There is no need to come meter reader come to the residence of the consumer. And the disconnection and reconnection could be done remotely. There is no need to that lineman will be coming to disconnect it again to reconnect it. This is the only. And the most dangerous feature is available is that it can be operated manually by the distribution license. They can program it. That is why the TOD tariff is coming. It will be offered, they will sort of manipulation actually. The other is smart guarantee. If they can operate, they can program the meter remotely, that it will be taking reading this way, that way for 3 hours or 6 hours this, then again 6 hours and 6 hours this. In that case, they can manipulate it, that it will be faster by 10% or 5% like that. That aspect is there. So far smart meter is there, the consumer's protection is not there, and it is 100% distribution licensing free. And they will be at liberty to operate the meter at their sweet will and whims. That is the gray area. The smart meter in prepayment mode simply enables, again, smart meter has the facility of prepayment mode or post-payment mode. If it is placed in post-payment mode, meter reading will have to be taken, bill will have to be set, then consumer will pay the bill. And if it is placed in prepayment mode, then consumer will have to pay in advance. That is another consumer interest issue. The smart meters in prepayment mode simply enables distribution licensing in advance. The huge money for replacement of more than 20 crores. Actually, in India, it is around 22 crores will be replaced. Functional digital meter. Existing there. As we showed, that private players can extract money in advance. Actually, in smart meter in prepaid mode, all the domestic consumer will have to pay in advance before they use electricity, they will have to pay in advance. That means private players can extract money in advance. That is before the consumers. That only 90 lakh smart meter till now 90, which is less than functional meter, which were functioning very nicely. That's we become those are placed in a dumping ground. It is a national loss. The Assam Electricity Regulatory Commission maintains silence, remains content in giving in principle approval. Although serious anomalies came to their notice on the matter. Actually, that I am explaining. The DTR metering and feeder metering, it is a very essential for the distribution license. Actually, they are to find out as to where the loss is taking place. For that, they are to meter their distribution transformer as well as feeder. That is not done. They are putting only smart meters in the residence of the consumers. The distribution network of Assam was a major event.
is Assam specific issue. That's why we are actually the majority of the RDSS scheme is around 4,500 crores in Assam. Almost actually, when a meter will be checked, if it is malfunctioning, if it is not working properly. In our case, and in consumer, those meters were replaced by smart meters. But those money could have been invested for improvement and strengthening of distribution network. But instead of giving trust on distribution network, almost entire money of RDSS scheme spent for pursuit of so-called smart meter. There is not a single meter manufacturing unit in Assam. But as I have told you, more than 40% of the consumers' meter have been replaced by from the manufacturers of Gujarat, UP, etc. But in case of Gujarat, it is a national thing. Gujarat has the allotment of 1,65 lakh smart meter. But till now, they have replaced only around 1 lakh something. That it shows that in Gujarat, they are a little bit shaky. But in other parts of the country, they are replacing the meter by using all sorts of coercive measures. With the Consumers Association and some other organizations are protesting this anti-people initiative of government of Assam. Sooner good senses prevail upon the government and more better it will be for the country. With these few words, I conclude my speech. Thank you all. Long live All India Electricity Consumers Association. Dhanavan, Mr. Bimal Das. Now I invite Mr. S. Gandhi. You go. Respected President of this Commission Convention, All India Electricity Consumer Association, and the dignitaries in the dais, and my dear friends. Please pardon me, I am choose to speak in English. I am Gandhi from Tamil Nadu. I am representing retired engineers of the Tamil Nadu who are fighting in the social sector. Actually, I am not in consumer sector, I am in trade union sector. And we are fighting with all the regulatory commission and the high courts about the sectors as what it is going on in the larger area of corruptions there. And Mr. Ashok Rao, at the end of his speeches, he said that the consumers and the employees must cooperate and then the corruption should be eliminated. But now the corruption is not springing, it is not coming from the bottom, it is percolating. It is coming from the government to the employees. So, it is very difficult. Almost all states has got regulatory commissions. The regulatory commission is missing only one point. It is not regulated. As you know, the Electricity Act, in its objective, it says, it's distancing the government from the electricity. The objective of the electricity state is the distancing the government from electricity and fixing tariff and other things. Now the smart meter is distancing the DISCOM from the consumer. Everything will be done remotely. That's a question. Why it is being done? Now already the meters have been changed for 3 to 4 times. Now there is a static meter almost in everywhere. Once the electricity sector was open to the private sector,
First generation has been taken up. Secondly, in distribution, all the business sectors, all the equipment sales sector has been opened. The smart meter is one of the marketing area for the private parties to come in. So now they come for a smart meter. What this smart meter is going to do is already been explained by my good friend from Assam. It is remotely disconnecting and reconnecting. What is the necessity for the smart meter? How it is being modified in our state? They are planned to purchase 3 crore meters. 3 crore smart meters now they plan. The former electricity chairman, he wanted to award this tender wholly to the Adani. It was agreeable to the state government. Then the tender was cancelled. 3 crore meters. 3 crore meters for domestic consumers. We have 2.32 crore domestic connections. Please see, I can tell you in the lakhs. 232 lakh domestic consumers are there. In our state, first 100 units is free of cost to the consumers. Who will be the state? Who will be in the slabs? All the consumers, all domestic consumers will get 100 units free. There are 91 lakh states who are consuming less than 100 units in 2 months. That means 91 lakh consumers will not pay any money at all. Why they need to book a smart meter for them? Another slab is 200, between 0 to 200 unit consumption for 2 months. These people will not pay for first 100 units and they will pay for the next 100 units. Their maximum payment is 260 rupees for 2 months. If we install a smart meter, the distribution company will pay for the smart meter company 240 rupees. To collect 260 rupees, the company will pay 240 rupees for the smart meter company. Because smart meter is not been wholly purchased. It is on 10-year turnkey basis. They will fix a smart meter, there will be a communicator, there will be a server, there will be a billing assistant. This billing system. So there will not be any human part coming here, only fixing the meter and releasing the meter. The entire data, you please see that why they need to place smart meter is not for measuring the electricity or collecting or disconnecting or reconnecting or anything else. Now the world is connected with the data. It is a thirst for data. Data is required for the cloud. For the cloud is requiring for artificial intelligence. The connection is the whole system is working in a smaller part. The electricity consumption will tell how a state is getting developed, in which area, how the consumer is requiring, when he is using the electricity. So entire data is necessary for artificial intelligence. For artificial intelligence, they need data also, for which they wanted a matter to be privatized. See that we have a company got Green Arc. He was fixing a smart meter for all the high tension services. Once there was a dispute between the company and the Green Arc. He closed down the server and went away. The discount company has no data for all the HD services. He driven all the distribution engineers go and download all data for all 24 months. Now if smart meter comes, for 3 crores consumers, you cannot go and take and download the data. That means it is one of the foolish idea. Any company cannot sell its
commercial data to a third party. I think I can explain, you can understand what I mean. How the electricity body is giving all its data, because one industry is there. We will take it as a cement industry. The cement industry is consuming data. The cement industry's production, everything, any company's production, any company's sales, any commercial houses, all data are being centralized by electricity consumption. If electricity consumption goes up, his sales is good. If electricity consumption is taken for a textile industry means, if 1.49 unit per kg of yarn. So every industrial production can be measured by data of the electricity. If the electricity data has been privatized, it can collect the data of the entire state economy. This is the idea of the smart meter. The idea of the smart meter is not metering or collection or remote control or remote disconnection. It is for the economical survey that need to take up, because even in China, the growth rate is not being measured by various data. The electricity sector is the measurement. It's the basic measurement of development of growth rate or social respect or social development. If a consumer consumes more, means they are living in a higher status. If a consumer could not consume even 200 units in a month, even 100 units in 2 months, he can consume only less than 50 months, he is living in poverty. So it gives a social data. It gives industrial data. If a consumer in the agriculture is with trained, it gives an agriculture data. It gives the groundwater potential data. So the smart meter, the concept of the smart meter is largely been introduced to assess the economic status and the task for the artificial intelligence. Artificial intelligence lives on the data only, for which they are spending it. Once the smart meter comes, the employees will be reduced. The employees will be reduced. There is no job opportunities. The job opportunities will shift from common employees to some skilled employees in the IT sector. Because smart meter is to be connected with a communication system. Communication system. The communication system must come for the server. And a server has to be maintained for that. From server, from that, the data of reading has to be again to be generated for a billing system. So another system has to come in. So entirely all data, all system is going, all the job opportunities of the skilled, now trained in skilled workers, in shifted to the IT workers. It will be reduced. So they want, why it is being because electricity is not for the poor. It's always there. Mr. Rao has already explained. There is a two society, one is rich and another is poor. Market do not need poor. Those who cannot serve the market, there is no need for them. Market need not care about them. Therefore, the system is, the entire resources is being stolen by the rich. They are moving the matter to the rich. It is a very social injury that is going on. Electricity is a share, is a right of the consumer. How it is a right? How it is a right? You take it along. Any electricity, if you say solar, wind, coal, biomass, or gas, anything is the resources of the state. It is the resources. It comes from the solar radiation, it comes from the wind power, it comes from the coal, from the gas power. It is being reduced as electricity at all.
So every citizen has got a share of the national resources. Now, the national resources of electricity is being taken away from the common man to the rich person. Those who can afford to pay for the electricity will go up, take it up. If you are not afford to pay the electricity, there will not be electricity for you. Prepaid meter, what it means that? It means if there will be only one slab of tariff in the future, there will not be any steps tariff. In my state, the electricity sector in domestic got 10 slabs. All the slabs will be scrapped because we have gotten. There will be a cost per unit. It is not a cost in slab. Is charged from 6 rupees. Whether you are consuming 200 units or whether you are consuming 2000 units, your flat rate will be charged. That is the target of the smart meter. It means the electricity will not be slabbed according to the social needs. It will be slabbed according to the generator. Now the Electricity Act itself is designed only for the generator, not for the consumer. Electricity Act is pro-generator. It is not for the pro people. Electricity is now you can say in the amendment, Electricity Amendment Bill came when it came. They commercial, agriculture and common service. Services, even in industrials we have got then feed because people are coming. Not in rural area. Please take note of it. I am living in Chennai. The Chennai demand is 4,300 megawatt in summer. Chennai city alone. Chennai city alone consuming 4,300 megawatt in a year, the summer. Next to me is a Kerala. It's equally developed state. The entire state demand is only 4,400 megawatt. The entire northeastern states, 7 states are there. The entire northeastern states are consuming nearly 2,000 megawatt. 7 states consuming 2,000 megawatt. Pune city is consuming 2,000 megawatt. Electricity is not equally distributed to all the people. Only urban people are enjoying it. I don't say the Kerala is a not developed state. It's a developed state. It's an educated state. But it is largely only domestic. The entire Kerala load is only 4,400. The entire Madras city load is 4,300. Electricity has not been equally distributed to all the consumers, all the people of the India. Only urban people are consuming more. So, the private sector is targeting only the urban area. If the private sector is targeting and the distribution state, you take it. In Tata, in Delhi, Tata is here. Adani is here. In Mumbai, Adani is there. Tata is there. In Calcutta, CE is there. Parties are not come. In all metropolis, the private parties has come.
area. They do not want people. So the design has got various objectives. The objective is to make the slab rates, it's about single slab rates. The cost of the unit is only single lakh. And secondly is the private party, when he wanted to take over, he must be softly placed there, because he do not want more people to get payment. Everything should be digitalized and we take it. And the private party will sell the data. The private party will sell the data, consumption data that requires for the artificial intelligence. So for which only the smartless government introducing a smart meter. If you want a smart, why you would introduce a smart meter? It's not necessary. In my state, 91 lakh people is consuming less than 100 unit in 2 months. They are not going to pay. And then 64 lakh people who are consuming below 200 units, and they are paying only 260 rupees in 2 months, for which the state government has to pay 240 rupees. After all, out of 2.32 crore consumers, 1.56 crore consumers do not need smart meter at all in the metering system. As for the metering system, they do not need. Therefore, the electricity sector is open to the private sector. They first enter into the generation. Now they slowly creeping into the transmission areas. And now they wanted to capture not the distribution area, they want to take the care of the cake of the distribution. That is the urban area, urban distribution. There are 5 amendments have come. All the 5 amendments have been withdrawn, including the last amendment of 2022. They have withdrawn. Again, they are not going to, they are not tired of it. Another 6th amendment will be coming. They withdrawn all the 5 amendments to introduce the 6th amendment. So we have got a very great war to done with. We have got a great gulf between our consumers and ourselves. There is a great gulf between the trade union and the consumers. Unless we bridge all these matters, we cannot prepare for a fight with the government. Because the entire world is going towards a right-hand end for governments. Whether it starts from America or whether it goes to the German or everywhere, it is only the right-wing governments are coming in. They are interested only on corporates. They are not interested on the common. That is the whole philosophy of the entire global system. Therefore, we are people towards people, common consumers or common people. We have to serve only the common people. If we want to serve the common people, means we have to bridge with the common people. Lest we cannot rise up, we have to suffer. We will leave the people to suffer. Not only that, we will not leave any good thing for our coming generation. We are all working, we are all saving, we are all doing everything. Is only for our next generation. The world is meant for our next generation, not for us. We must work for our next generation. If at all we want to work for the next generation, means we have to work now. We have to say, we have to bridge with the people. Smart meter is not going to do anything smart work. It is going to do a smart work, not for the people, but for the corporates. Therefore, not only smart meter is a, now the security meter and the static meter everywhere is serving good. The only thing is, we are not connected the communicating system and everything. We need it. We need, the DISCOM employee must have a connection to every consumer. The smart meter disconnect. The smart meter disconnect the DISCOM company of a personal contact of the
discount company with every consumer. If a discount man is going to the premises every month and taking a reading, means he is having a connection to the consumer. He is visiting the premises. The smart meter will absolve that. It means that every people will be controlled remotely. Every consumer will be controlled remotely. There will not be any human effort. If a prepaid meter comes, the prepaid meter says your amount has been exhausted, means nobody can interfere, even if the meter is given. Now this commander is the meter, not the human effort. If the meter says, the smart meter says, you paid, for example, if you have paid a prepaid meter, we have paid some amount. The meter is defective. The meter says your amount has been exhausted. Who will interfere there? Who will interfere there? So machine will rule you. The machine, the system engineer or distribution engineer cannot interfere because it is very small. The meter is small. And the engineer is not small. He cannot identify your fault. The consumer grievances cannot be complained with him, even though he knows it is wrong. Even though he is wrong, because it is communicated, it is recorded. Who can change that? So, smart meter means all human beings are mastered by a machine. Now, machine is the master and people are subordinates. People are subordinates. This is the system of the smart meter. This we need to explain to all the consumers. Even now, if you have got a starter meter or anything, and the communication system is, the entire system is digitalized. What happens our UPI? You are paying money. Anybody can spend it. Now the entire data is going for the third party, not for the discount. The entire data is for the third party. If the spurious consumer and the third party is collided with, the revenue will be drained. They take a company which consumes 1 crore unit in a month. The data is not with electricity board. The data is with a server. The data is with a billing system. If the billing system is collided with that company, it can steal. Because your system is locked. What is pilferages is happening? If you want to find it out, you will take more time. By that time, the entire things will go off. Because only by audit only you have to go to find it out. Rest you cannot detect it. So it is not for the health of the electricity board. It is not for the health of the board, health of the consumer. It is not the health of the entire health. National income. It is for the people who are wanted to earn profit in spurious way. The smart meter is only pilfering. Not only pilfering, we cannot say pilfer means a small theft. I think an object theft, what I can say? Robbing. Looting. We can say looting. So for looting the matters, that the smart meter will do it very smartly. Thank you, friends. Now I welcome Mr. A.K. Jain, former Chief Engineer of Damodar Valley Corporation, DVC. We are very happy
is joined this convention. So I am requesting Mr. Joy to place his valuable discussion. सभी को नमस्कार। I think many are here from Bengal also. So my friend Samar Singh Sahib, so first of all, I salute the leadership of the All India Electric Consumers Association for organizing such a wonderful program, which is need of the hour. Unless and until we all unite, we cannot fight all this difficult fight. And you have already heard many, आपने सभी को सुना है, और उसके पीछे में मैं जो बोलूंगा दो चार चीज, सारी चीजें इतनी अर्जेंट हैं कि आज ही सॉल्यूशन इसकी निकलनी चाहिए, लेकिन निकल नहीं पाती है। मैं तो जितना दिन डीवीसी में रहा, वहां भी एसोसिएशन करता था, इंजीनियर्स एसोसिएशन का। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि कुछ तो हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल रहे हैं इन आवर ड्यूटीज। हम लोग जहां से चोरी होती है उसको प्लग नहीं करना चाहते या उस पर कंसंट्रेट नहीं करते। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये जो यहाँ दिल्ली का जो प्राइवेटाइजेशन हुआ, टाटा एंड बीएसईएस या रिलायंस, टाटा ने यहाँ पर एक रिठाला का गैस टरबाइन स्टेशन है, 36 मेगावाट का 3 यूनिट है, वो बंद है। उस बंद यूनिट से टाटा ने परचेज दिखाया है, आई थिंक एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर, मैंने ये आरटीआई में डॉक्यूमेंट निकाल रखी। वो मतलब जो प्लांट बंद है उससे वो परचेज ले लिया एट द रेट ऑफ 14 रुपीज पर यूनिट। और उतना ही नहीं, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन ने उसका अप्रूवल भी दे दिया है, वो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट। तो अगर इस तरह से लूट चलेगा, टाटा, अब सोचिए, टाटा जो कि बहुत नाम है कि नहीं तो बहुत ऑनेस्ट है, डिसेंट है, उसका ये कार्रवाई, ये बताना बहुत जरूरी है और इसको एक्सपोज भी बहुत जरूरी करना है। दूसरा मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, ये डीआरआई का है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, एक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है। 50,000 करोड़ का अनड्यू ओवर इनवॉइसिंग में पैसा लिया है। उसमें मोस्ट ऑफ द शेयर इज बाय अडानी। कोल एंड इक्विपमेंट्स जो है हम लोग बाहर से जो लाते हैं चाइना से, उससे मतलब अपना बीएचईएल से नहीं लेके चाइना से ले। अब उसका जब डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भेजिए चाइना, टरबाइन भेजिए। एक एग्जांपल मैं जानता हूँ, ये हिसार में एक प्रोजेक्ट इनका 600 मेगावाट का है, सिमिलर यूनिट डीवीसी में भी लगाया था। उसका जब ये हो गया, उसको बोला भेजिए। अब भेजने में कितना कहेगा, बोला खर्चा आपको देना होगा। अल्टीमेटली बीएचईएल एग्रीड टू डू इट एंड दे डिड इट। तो ये अंतर है, मतलब आप अपना चाइना से लेके यहाँ बीएचईएल को डुबाया। So this is also one of the aspects that we have to think and we have to do, and we have to expose and we have to take appropriate action. तो ये जो 50,000 करोड़ का जो मैंने बताया, ये 2020 हमारा केस चल रहा था, अडानी के अगेंस्ट में ही हम लोग ने किया था। तो ये डीआरआई ने मतलब अडानी के अगेंस्ट में किया। वो करता क्या है, कोयला जैसे ऑस्ट्रेलिया से या इंडोनेशिया से या और कहीं से आ रहा है, वो डायरेक्टली उस थर्मल पावर प्लांट में जाएगा, लेकिन उसका इनवॉइस 2-3 कंट्री में घुमा के लाएगा, उसमें वो ओवर इनवॉइसिंग कर देगा। तो पैसा वो लिया, खर्चा किया x, यहाँ 2x में ले लिया, 2x ले लिया यहाँ, या और भी ज्यादा लिया है जो। अब दिखाएगा क्या इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से कि भाई हमको कोयला बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो हमको बिजली का दाम बढ़ा दीजिए। तो बिजली का दाम बढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आल्सो इज इंक्रीज्ड। एंड थर्ड व्हाट दे आर डूइंग, कोल वहां से आता है खराब क्वालिटी,
दिखाता है बढ़िया क्वालिटी, और उसमें पैसा वो जो बनता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पॉलिटिकल एंड दिस दैट, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। मेरे पास ये रिपोर्ट है, बिकॉज देयर इज वन केस public interest litigation was filed by Central for Public Interest Litigation. Prashant ji was taking up that case. High Court directed CBI कि मैं इसका एफिडेविट में आप दीजिए। CBI has given the affidavit. मेरे पास वो रिपोर्ट है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। आप सोचिए इस तरह का लूट चल रहा है और वी आर नॉट अवेयर। इसको जब तक ये कंज्यूमर्स एसोसिएशन कंज्यूमर नहीं जानेंगे, ईच एंड एवरी कंज्यूमर हैज टू नो, देन ओनली रिएक्शन विल कम एंड वी कैन अपोज इट। आप सोचिए किस तरह से लूट चल रहा है, वी आर एक्सेप्टिंग। और इधर से ये आप उसको देने जा रहे हैं, आप टाटा को दीजिएगा, अडानी को दीजिएगा, नहीं तो इसको दीजिएगा, रिलायंस को दीजिएगा, वो क्या करेगा? लूटेगा, किसी तरह से लूटेगा और हम लोग बेवकूफ बनेंगे, कंज्यूमर बेवकूफ बनेगा। तो my idea is this, my suggestion or my proposal before the Consumer Association, that let us file as a consumer of the state, different states in different courts. I have decided, I have discussed with Dubey Sahib also, and to others also. I am discussing with some my advocate friends also, that ये जो privatization जो हो रहा है, एज ए कंज्यूमर हमको डर है कि ये इसमें कंज्यूमर ये एलएचटी का टैरिफ बढ़ जाएगा और हमारा प्रॉफिट से जाएगा, इसलिए इसको नहीं होना चाहिए। ये करना जरूरी है। ये है कि टैरिफ बढ़ेगा। आप जानते हैं, अभी बता रहे थे दुबे साहब, बॉम्बे का टैरिफ अराउंड 18 रुपीज पर यूनिट है, यूपी का 6.50 पैसा है, 6 रुपीज 50 पैसा है, दिल्ली का अराउंड 8 रुपीज और 10 रुपीज समथिंग लाइक दैट, तो 8 रुपीज। तो आप सोचिए इस तरह से और पैसा बढ़ता रहेगा। उसे परचेज ले लिया और डीआरसी का अप्रूवल हो गया। आई हैव गॉट द डॉक्यूमेंट विथ मी। और मैं एक दो और पॉइंट बोल के मैं छोड़ूंगा, मैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तो डीवीसी में था, मैं वहां का करप्शन बहुत हाईलाइट करता था, इसलिए मुझको चार्जशीट वगैरह भी बहुत मिला। इवन बिफोर रिटायरमेंट 5 दिन पहले हमको चार्जशीट मिला था, बट आई डिड नॉट सरेंडर। मैं एक वहां पर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, क्योंकि डीवीसी पेंशन देता है, तो हमने एक पेंशनर समाज बनाया है। उसमें मेरे 2000 मेंबर्स अभी मेरे हैं। अभी करीब 14,000 पेंशनर्स हैं हमारे यहाँ। अभी मैंने रिसेंटली एक घपला पकड़ा है कि 1207 pensioners who are not existing, they have been paid pension for 10 months without submission of life certificate. मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई ने रिफ्यूज किया। फर्स्ट अपील लगाई, उसमें भी नहीं दिया। मैं सेकंड अपील में गया, सेकंड अपील का हुआ लास्ट ईयर, आई थिंक 4 मार्च को हुआ था, उनको देना पड़ गया। आप सोचिए, जो पेंशनर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसको 10 महीना पेंशन कैसे दे सकता? तो हमने बोला, वहां वो आजकल सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी वैसे ही आते हैं। देयर आर 10 पोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आउट ऑफ दैट 8 खाली रखा हुआ। तिवारी वो बताइए, क्या आप लाइफ नहीं देते हैं पेंशन पाने के लिए? तो ये कैसे ये किया, कैसे बोलते हैं कि हमको नहीं मिलना चाहिए? Then he realized and बोला no no no. After the hearing he kept me for half an hour. He discussed, बोला आप क्या करते हैं? तो हम बोला यही काम करते हैं, ये करप्शन को एक्सपोज करता हूँ और आप लोगों को एडुकेट करना चाहता हूँ कि आप लोग करिए। आप यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम आप लोग तो कुछ कीजिएगा ना, तभी तो मतलब बचेगा, अदरवाइज तो कंट्री बचेगा कैसे? तो देन ही गिव अ बिट, हमारे पास है आरटीआई का रिप्लाई भी है। आई हैव रिसेंटली रोट अ लेटर टू मैनेजमेंट फॉर गेटिंग द मैटर इन्वेस्टिगेटेड। मैं इसी वीक में या कमिंग वीक तक में मैं सीएजी से मिलने जा रहा हूँ, जो कमर्शियल ऑडिट देखते हैं, जितने सीएजी हैं, तो देखता हूँ उसमें स्पेशल ऑडिट कराने के लिए। एक मैं एफआईआर भी इस पे कराने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि एक मेरा मैनेजमेंट से चल रहा है वार्ता, वो कहीं गड़बड़ न कर ले, इसलिए वो हो जाए तब फिर मैं इसको उस पर रखूंगा,
केवल चालाकी भी करनी रखनी पड़ेगी कुछ काम करने के लिए. So with this I think I have if you have liked, I think in this line we have to move and we should expose and सबको मिलकर ही करने से ही हम लोगों को solution आ सकेगा. This is what I think. So सभी को नमस्कार. We are very enriching by the discussion of Solemndra Dubey. He was our inaugurator. Mr. Ashok Rao, Mr. S. Gandhi, Mr. Bimal Das, and lastly, Mr. A.K. Join. Now, I invite Mr. Somasekar. He is our Vice President in this organization. Respected President, leaders sitting on the dais, and dear delegates. In this national convention, so dignitaries who have spoken here, they have, each one of them, they have comprehensively placed their views. So by that, we will understand how we are being exploited, being looted, and why government is bent upon this electricity privatization. So it is very clear why government wants to privatize this electricity. Maybe it is a BJP or Congress or any other government. These governments, they are serving the interest of capitalist class, corporate companies, to ensure their profit, to ensure their maximum profit. This important sector, service sector, is being privatized. Not only generation, even transmission, distribution, everything they want to privatize. One of another speakers, they clearly explained how they want to loot us, they want to exploit us. So with this, we are having a big task before us. Very important responsibility we are having now. We have to educate the consumers. We have to bring awareness and we have to unite them. Without uniting the consumers at grassroots level, we cannot develop a strong resistance movement. To develop a resistance movement, we need a association, consumer association. Here, All India Electricity Consumers Association is playing a very important role. More than 24 states, we have started our work. We are making campaign, collecting signatures, holding our conventions, zonal conventions, state level conventions, forming consumer committees at every level. So this is very important task before us. We have to organize consumers and build up a mighty movement against this privatization of electricity and introduction of this prepaid smart meters.
without organizing consumers. You cannot stop this. One after another speakers, they emphasized this. Consumers are the masters. We have strength. We have to show our power. So the time has come, and all the dignitaries, guests, they have given a proposal that consumers, employees, and the farmers, peasants, we have to unite together. Together we have to build up a mighty movement against the central and state governments. So this is the task we are having today. So this national convention urges upon all the delegates to take initiative to develop at grassroots level consumer committees, and by that we have to build a movement. So here I request all of you, and we have to chalk out a campaign program. There is a proposal in our main resolution. There is a time frame from April 1st to 7th April. We have to organize demonstrations, agitations. After that, signature campaign, collecting signatures from consumers. And we have to submit a memorandum to the Central Energy Minister and the State Energy Minister through the governors. So this way we have to finalize this draft resolution. We have to approve this resolution. With this, we have to go to the consumers. We have to play a very important role in building up this movement. So with this, I request all of you take initiative and build up a strong resistance movement against the privatization of electricity and against the prepaid smart meters. Thank you. Thank you, one and all. Long live AICA. Now I invite Mr. Prahlad Sahu of Odisha. Respected President and dignitaries sitting on the dais, delegates from different parts of the country. मैं ओडिशा से आया हूँ। एक बात आप इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले ओडिशा में जो कंपनी लिया है टाटा कंपनी, वो अनाउंस किया है, गवर्नमेंट अनाउंस किया है 3 लाख डिजिटल मीटर। वो इफेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है। और हम लोग ओडिशा से छोटा छोटा डेमोन्स्ट्रेशन, कहीं कलेक्टर ऑफिस में, कहीं टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है वहां डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और उसका डर से टाटा कंपनी डिक्लेयर किया जो डिफेक्टिव है, जो खराब है, 3 लाख डिजिटल मीटर, वो सही हो गया। तो इसी तरह हम लोग एकजुट होके लड़ेंगे तो प्राइवेट कंपनी जो प्राइवेट करने जा रहा है, स्मार्ट मीटर बैठने जा रहा है, उन लोग को हम खत्म कर सकता है। इसलिए मैं अपील करता हूं, जितना डेलीगेट इधर आए हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, सब ग्रासरूट लेवल से इकट्ठा होके हमको विरोध करें तो हम सफल होंगे। यही मेरा बात है। थैंक यू।
Now I invite Mr. Tikera. Respected President of this convention, other leaders in the dais, and friends from all over the country, all consumer friends. So, first of all, I wholeheartedly support the main resolution which was been read out. In addition to that, I just like to place one more thing, being in IT, coming from IT sector and from cybersecurity thing. This smart meter is a smart meter. The other aspects, other leaders have already spoken. I just want to place that, and even Mr. Gandhi also placed that same thing. Meant for data collection, and data collection means surveillance. You just imagine when something is being controlled remotely, and means everywhere software is there, and the software, you know, is hackable. So it can go to any hands. So our protection of our data is at stake. So this is another aspect which we consumers should think about. And not only that, software, if software malfunctions, so then there will be a breach. Suddenly there will be no current also. So we can imagine all those situations. If this smart meter comes, what can it leads to? Okay. Then one more aspect of this, many states, the government is giving a popular this thing for the vote, saying that the free electricity, 200 units, 300 units. Actually, are these so pro people? They are announcing 300 free units. There also the interest of the private hand is there. So now they are privatizing the generation, transmission, now the distribution. So our tax money, in the name of this thing, will go to the private hands, and they will increase the price, and we consumers, as we are the major consumers, will be within the 200, 300 units. They will not, but anyway it is coming free to me, but they can go on increasing, and the private hands comfort will be fulfilled. So these are the two aspects which I want to place here. With this, I conclude. Thank you for the opportunity. Now I invite Mr. Onukul Bhadra from Bengal. Mr. Onukul Bhadra. Hey, Mr. Onukul Bhadra, you are requested to come to dais and to take the floor. Now Vijay Pal Singh from MP. Vijay Pal Singh. आज के
इस सम्मेलन के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे नेतागण और अतिथिगण, है तो मैं उस प्रस्ताव का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण विचार यहाँ जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स आए, उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोगों को इंफॉर्मेशंस दी। और एक बात जो हम लोग भी महसूस करते हैं कि ये जो जनता के खिलाफ नीतियां सरकार ले रही है, खास तौर से बिजली के क्षेत्र में, जो बिजली का निजीकरण, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगाने का ये जो फैसला है, जो निश्चित रूप से आम उपभोक्ता के हितों के खिलाफ है, इसको अगर रोकना है तो हम लोगों को एक बेहतर तालमेल बनाना होगा उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच में, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं। और जो इसमें प्रस्ताव में जो प्रस्तावित है कि 1 से 7 अप्रैल तक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जगह जगह और फिर हस्ताक्षर अभियान, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही सही है। और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से, सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से हम ज्यादातर पहुंच सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और लोगों को जागरूक बना सकते हैं। बस यही कहते हुए कि हम लोगों को प्रयास करना होगा, ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं के बीच हम लोगों को जाके उन्हें जागरूक करना है, सचेत करना है और फिर संगठित करना है। और उस संगठन की ताकत से हम लोग सरकारों को निश्चित रूप से इस पे मजबूर कर सकते हैं। आज ही हमारे रीडिंग न्यूज़पेपर में न्यूज छपी है, कुछ लोगों के जो स्मार्ट मीटर लगे हैं, ज्यादातर स्मार्ट मीटर्स का जो बिलिंग है वो किसी का 30,000, 40,000, 60,000 तक है। तमाम लोग परेशान हैं, उसको सही करने का अभी भी कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये जो स्थिति है, ये हम लोग अगर सही से इसमें काम करें तो यही कहते हुए कि हम लोगों को थोड़ा अपना जो प्रयास है उसको तेज करना होगा। उस संगठन की ताकत से हम लोगों को इसको रोकना होगा। धन्यवाद। Now Auditorium from Bengal. This convention against privatization of electricity, installation of smart meter and electricity amendment bill 2022, I am just against these unruly anti-people policy of the government, and all the speakers from different states already convinced the people, the consumers, to start movement in grassroots level, and I am also the same opinion. We have to go to into grassroots level, start movement. The two consumers of the in different states, especially I am from Bengal. Bengal consumers are suffering in various aspects. Not only smart meter, installation of smart meter is a serious matter, no doubt. But in this way or that way, they are pricing the
cost of the electricity. Small consuming electricity, and one day will come, thousands and one have to go out from electricity, using of electricity. You can't. And in Bengal, WBSEDCL, West Bengal State Electricity Distribution Company, state organization, and in Calcutta, Calcutta Electric Supply Corporation, owned by Goenka. Though in district, in rural areas, the consumers are, especially the small consumers, are suffering from the government-owned organization. But once smart meter is introduced, after one after another, then the price is high, and they cannot be afford to use electricity. So that small scale consumers from rural areas are coming forward to move against this policy, especially the farmers, the small shopkeepers, small traders, and the small people, rural dwelling people, they are suffering. So that we are going to organize that very consumers, and it is the need of the hour to build up national-wide movement, that the people, the speakers already said, and the dignitaries, they have explained how the smart meter is so dangerous. So that I shall come to call all of you to come forward and to create a mighty movement. Okay, thank you. Now Mr. Chandran from Tamil Nadu. Mr. Chandran. Next is Dirishali from West Bengal. Time is very short. So Mr. Idrishali, you come from Assam. Idrishali, sorry, from Assam. Respected leaders, delegates, already our dignitaries have spoken and placed their views exactly what we have to do it. So with that, I take the pledge on behalf of Tamil Nadu, and we will take to the masses, and we will bring the masses to the street against the government's all these anti-people electricity bills. Please, thank you.
Mr. Idris Ali. Mr. Robin Devnath from West Bengal. Respected President and respected leaders on the dais and delegates. यहाँ पे जो स्पीकर्स बोला था, मैं सहमत हूं। मैं चाहता हूं from the grassroots level we should organize a mighty movement against installation of smart meter, prepaid smart meter, and we should fight against electricity bill 222. Thanks. Mr. Idris Ali. Respected President of this convention and dignitaries on the dais. I have no more to say, only I wholeheartedly support the resolution presented by our General Secretary Venugopal. I would like to say that state, since it is a fundamental right to have free electricity to all the consumers. As you know that there was an act 1948 where there was a rule made by the government that there will be no loss, no benefit. So we want to free electricity for all. Another point, we know that all the superstructure made by the taxes of all the people, general people. So we have to right to find the electricity free. So I have nothing more already said in favor of this
So I supporting the main resolution. I conclude my speech here. Thank you. Now Bimal Jana. Respected President and respected invited distinguished guests and the leaders on the dais and the delegates and friends here present here. You have heard many things about electricity and the danger which are coming to us. We have to face that danger. So we are united here and we have to check out our programs, how to face this danger. You have already heard that electricity, as per water and air, it is very essential to us. So anyone means here a clique between central government and the monopolists and multinationals. They are clicking to snatch away this fundamental right. They will snatch away this fundamental right, the electricity, which are very essential in our life. And they are clicking that this electricity will be controlled by remote place. You think that bill is coming, electricity bill 2022. And you have already heard that another bill also will come, electricity bill 2025, which will bring to us that bill that electricity will be controlled by the central government, not by the state governments, not it will be in concurrent list. It will be in central list. And it will be controlled by the remote place. And if electricity is going to be multinationals, then it will be controlled by America, Germany, East Europe countries. They will control from that. They will control from that the smart meter. So what will happen? We will have to face darkness. So we are assembled here to fight these attacks. We will return home and we have to go to the consumers, farmers and employees, and we have to unite them, and we have to fight these attacks. So this convention and yesterday our parliament march, already we are united, and when we will return to our home again, we will strongly, unitedly, our struggling strength will enrich, and I hope that we can face and we can overcome this situation, and the smart meter, which is danger to us, it will go away. We will throw away the smart meter, and the government will be compelled to withdraw this bill, withdraw this attack. This is, I wish to tell you. Thank you. Dosa, already time is over. One delegate from West Bengal, they sent a proposal to the House regarding the main regulation. There are some mistakes
in the main resolution. So we will definitely correct the resolution. Next, तो प्रस्ताव दो प्रस्ताव आपका पास रखा है। एक है मेन रेजुलेशन और एक है सॉलिडारिटी रेजुलेशन। और जो ये प्रस्ताव का समर्थन करता हो वो हाथ ऊपर उठाए। कोई है इसका विरोध में? यस यस यस। Yes, before the house. इधर जो चर्चा हुआ इनॉग्रेटर मिस्टर दुबे जी और अशोक राव जी, मिस्टर विमल दास जी, मिस्टर जैन और मिस्टर गांधी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखा है। अब सुना है, अरे जिम्मेदारी ये अखिल भारतीय बिजली उपभोक्ता समिति के पास, और कोई नहीं देश में, और कोई नहीं। ये आप भी सुना है इधर। तो कन्वेंशन का बात जितना स्टेट इधर शामिल हुआ, 26 स्टेट सुना है शामिल हुआ, लेकिन सभी स्टेट में हमारा जो ये संगठन इसका ताकत बराबर नहीं। लड़ने के लिए ताकत जरूरी है। ये जो गवर्नमेंट है ये ताकत बिना और कुछ नहीं सुनेगा। ताकत जरूरी है। ये उपभोक्ता का ताकत, उपभोक्ता मीन्स देश का जनता। देश का जनता कौन है? ये मेट्रो सिटी है, दिल्ली से लेकर गांव तक जिधर बिजली चला गया। 50 साल पहले ये नहीं था। अभी बिजली बिना कुछ नहीं चलेगा। ये कोई आम चीज नहीं सुना है। तो इसीलिए हमारा मूवमेंट बिजली नीति के खिलाफ, स्मार्ट मीटर के खिलाफ, ये मूवमेंट सबसे जरूरी है। और दुबे जी एक प्रस्ताव रखा है, बिजली उपभोक्ता और बिजली कर्मचारी एक साथ मिलकर मूवमेंट करने पड़ेगा। इसीलिए हर स्टेट में सिर्फ कंज्यूमर्स एसोसिएशन नहीं, जो वर्कर्स ट्रेड यूनियन है, जिधर एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो किसान है, तो शामिल करने पड़ेगा ये मूवमेंट। गांव गांव में कमेटी करने पड़ेगी। और भी होंगे, पढ़ गए होंगे। हाँ हाँ। कितने लोग देखें? 3 पे चल रहा है, वो अलग अलग पेज का बताता है वो ऐसे।